Guys, anyone of you know? हमारा एक discussion. Ammonium. Yes, ammonium. Then, when you get a patient with fear of darkness, Lachesis. yes, legacy is drama. जब भी आपके पास पेशेंट आता है having fear of darkness और उसके साथ साथ जब भी religiousness होती है, then remedy is stunning. So guys, shall we start? Are you ready? Last time कौन से लोगों को एडमिट करना रह गया था, इसी की वजह से आज वापस सेशन ले रहे हैं. So start with alopecia. The word alopecia is the medical term of hair loss. That doesn't mean any type of hair falling, guys. जब भी आपके पास पेशेंट आता है और वैसा बोलता है कि मुझे हेयर फॉलिंग है, तो दैट इज टिपिकल एलोपेशिया. एलोपेशिया का मीनिंग ऐसा नहीं है कि मुझे एलोपेशिया एरियाटा है या ये है या वो है, बराबर. दैट टिपिकली मीन बाय एनी टाइप ऑफ हेयर फॉलिंग दैट इज considered as a alopecia term. Okay, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूं. Is it visible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Hair is a far complex than it appears on the surface. तो अभी तक इसके लिए ज्यादा रिसर्च नहीं हुए हैं. Nowadays हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं. 10 में से 7 फीमेल came with the hair falling complaint. At the age of 70 पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसकी भी चीफ कंप्लेंट ऐसी होती है कि मुझे हेयर फॉलिंग है. So it is our duty to treat them at the age of 75. माजी आएंगे, उनको हमें treat करना है for hair falling. For that we have to know the normal physiology, normal cycle of hair, and along with the pathological conditions of the hair. So we all know that it is not only plays a vital role. It is appearance of the both man and woman, and but it also helps to transmit the same. That is very important part of the female especially. They are very much aware. They are very much conscious about their hair falling. Now let's discuss about the origin of hair. किसी का स्पीकर चालू है, प्लीज वो बंद करो. By week 22, that is a 5.5 month, developing fetus has all its hair follicles. At this age of life, there are about 5 million hair follicles on the body. Body के ऊपर 5 million hair follicles होते हैं at the age of 22 weeks. And the main important thing is that there are the total of 1 million on the head. उसमें से 1 million head के ऊपर होते हैं, rest on the other part. This is the largest number of hair follicle of human will have ever in their life. तो जो हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ के साथ हमारी जैसे लाइफ बढ़ती जाती है तो हेयर फॉलिकल कम होते हैं, ऐसा नहीं होता है. एज वी ग्रो हेयर फॉलिकल के बीच का डिस्टेंस कम होता है, ज्यादा होता है, लेकिन हेयर फॉलिकल्स आर रिमेन सेम. मोस्ट पीपल नोटिस दैट द डेंसिटी ऑफ स्काल्प हेयर इज रिड्यूस्ड एज द ग्रो फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. एज आई टोल्ड यू कि एज के साथ उसके डिस्टेंस बढ़ता है, हेयर फॉलिकल रिमेन सेम.
our scalp expand as we grow. That is the reason कि जिसकी वजह से now the structure of hair hair is divided into two parts: hair follicle and shaft. Follicle is a part which is remain inside the skin, and the shaft which is visible above the scalp. Two parts के अंदर divide किया हुआ है. Now hair follicle is a tunnel-like segment of the epidermis that extend down into the dermis. You can easily see this. This is the hair shaft, or this one is hair follicle. Okay. The structure contains several layers that all have separate functions. At the base of the follicle, that is papillae, which contain the capillaries and the tiny blood vessels in the nourishing of the cell, which is the living part of the hair. The bottom part surrounding with that is called as papillae and also called as bulb. So bulb is very important part in our discussion. You just kept it in mind. So mind में रखना. The cell that the bulb divide every 23 to 72 hours. This is one of the fastest growing cell of the body. This is also important while we will discuss about some type of hair follicle. So which is one of the fastest growing hair cell of the body. The outer sheath. Okay. The outer sheath contain all the way up to the gland the muscle called erectile papillae, very much important muscle and very tiny muscle. Any one of you know how the goosebump occur? Last session में जितने भी थे, they know the things, but still, any one of you, goosebump क्यों होता है? जब भी कोई स्टिम्युलाई आता है, तो वो स्टिम्युलाई that comes from the mind and that reaches up to the hair root, और वहां के अंदर this is the small tiny muscle which is called as muscle pili, erectile pili, जो relaxed position में होता है और वो stretch होता है. तो जब भी stretch होता है, it causes goosebump. Okay, this is the mechanism of goosebump and the structure behind the near the hair root, which is important. उसका एक ही रोल है, उसकी वजह से वो erect होता है. जब भी erect होता है, तो it also helps to secrete the glandular substance. When we experience a strong emotional feeling such as fear, sadness, joy, sexual arousal, anything, goosebumps may also occur during the time of physical exertion, even for small activities, like when you are having bowel movements. तब भी वो goosebump हो सकता है. Now the sebaceous gland, which is the structure around the hair roots, इसके अंदर होता है. So what is the use of that tiny substance? Sebaceous gland का role क्या है? So which secrete the sebum from the gland with a condition which helps to conditions the skin of the scalp. जहाँ जहाँ भी hair होते हैं, उसके अंदर उसको conditioning करने के लिए sebum का secretion होता है. If it is increasing excessively, it causes seborrheic dermatitis, dandruff, and if it is increasing, if it is decreasing in less amount, then it is causing dryness on the scalp. एक research है, according to that, women have far less sebum production than men, लेकिन ऐसा नहीं होता है. Male के अंदर भी excessive secretion हो सकता है और we are getting lots of patients with dandruff in even male.
Now, hair shaft. Basically, hair shaft is a outer substance, or if you are planning to research in hair, so this is the thing you have to understand. तीन लेयर के अंदर उसको डिवाइड किया गया है. The most outer part, that is cuticle, the middle layer, that is cortex, and the most inner part, that is medulla. So the outer layer that works as a protective part, that also transmit the sensation. The cortex, it is the main part which contain the melanin. जो आप रिसर्च करना चाहते हो, तो यू कैन डू वन थिंग कि आप ऐसी मेडिसिन सर्च करो इन फील्ड ऑफ होम्योपैथी के विच वर्क्स ऑन कॉर्टेक्स ऑफ द हेयर. कॉज जो आपको बाल के हेयर चेंजेस करना चाहते हो, ब्लैक बाल को ब्राउन बनाना चाहते हो या गोल्डन बनाना चाहते हो, तो यू कैन वर्क ऑन इट. ऐसी मेडिसिन शोधो, फाइंड आउट करो कि वो मेलानिन का सब्सटेंस चेंज करे, उसका कलर चेंज करे. जो होम्योपैथी ल्यूकोडर्मा ट्रीट कर सकता है, तो होम्योपैथी ये भी ट्रीट कर सकता है. हमें ऐसी मेडिसिन क्लिनिकली सर्च करना. You are the new inventors, you are the new generation of homeopathy. हमारा टाइम चला गया है. Now you are the new generation. आपको कुछ नया रिसर्च करना है. You came with that research कि पेशेंट का कलर भी हम इंटरनल मेडिसिन से चेंज कर सकते. Are you getting me, guys? Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. करो रिसर्च. Sir, हाँ जी बोलो. you told that sebum production अगर लेस होता है तो स्कैल्प में ड्राइनेस आ जाता है, तो उसका मेडिसिन क्या होगा? उसके लिए हमारी जितनी भी ऐसा रिसर्च नहीं है होम्योपैथी में कि सीबम का सिक्रीशन कम हो और उसकी वजह से जो ड्राइनेस होती है उसकी कोई मेडिसिन. इन वी कैन यूज विद द मोडालिटीज. तो हमारी जितनी भी ड्राइनेस वाली मेडिसिन है वो हम यूज कर सकते हैं. पेट्रोलियम, ग्रेफाइटिस एंड सारसापारिला, 3 आर द लीडिंग रेमेडी फॉर ड्राइनेस. उसकी मोडालिटीज क्या है? Modalities of sarsaparilla, petroleum, and graphitis. When we can prescribe these three remedy in different conditions. Any one of you know? Petroleum in winter. Yes, exactly. Perfect. And sarsa in summer. कोई यूज करता है क्लिनिक पे? sarsaparilla having the same dryness or even more dryness than petroleum, लेकिन modality मैच होनी चाहिए, that is aggravation in summer. And the graphitis having the same dryness, उसका जो काच पेपर जैसा अपीयरेंस होता है, उसके लिए that remains in whole season, in all the 3 seasons. Okay. So guys, dryness के लिए we can use our remedies, जितनी भी medicine dryness के लिए that we can use. Now the main part that we have to study, that we have to learn, that helps us to explain the patient. जब भी आपके पास hair falling का patient आता है, तो उसको ये cycle जरा study करके समझाओ, तो patient को confidence आएगा कि you know about the hair. This is the hair cycle. Hair cycle is basically divided in 3 parts. That is anagen phase, catagen phase, and telogen phase. Anagen phase that remains up to 3 to 5 years. The catagen phase that remains up to 1 to 2 weeks, which is a transition phase. जो लंबा नहीं है, which is very small phase, लेकिन जिसके अंदर बाल ट्रांजिट होता है. कैसे होता है? I will explain you. And the third part, that is telogen phase, कि जिसके अंदर हेयर रूट से अलग होके वो गिर जाता है. तो एनाजन फेज की जिसके अंदर बाल बड़ा होता है, लंबा होता है. द अनदर स्टेज, उसके अंदर वो रूट से डीअटैच होता है. एंड अनदर, दैट इज थर्ड स्टेज, के वो डीअटैच होके गिर जाता है और वो रूट के अंदर एक नया बाल है. दिस इज द नॉर्मल साइकिल व्हिच इज कंटिन्यूअसली इन प्रोसेस इन आवर बॉडी पार्ट के जहां जहां भी बाल उगते हैं. Is this clear, guys? Hair cycle. Anagen phase, catagen phase, telogen phase. ये आप माइंड में सेट कर लो.
ये मगअप कर लो to explain the patient. Now, hair on the scalp. Hair on the scalp grow about 3 to 4 millimeter a day. वो एक दिन में 3 to 4 millimeter ग्रो करता है. That means 6 inch per year. तो पेशेंट को बोलो कि इन जनरल दिस आर द इन जनरल नंबर्स. तो किसी का इससे ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है. इन जनरली इतने बाल, दैट इज 1 feet अप्रोक्सीमेटली 6 inch, सॉरी हाफ फीट. तो इतना 15 सेंटीमीटर जितना आपका हेयर ग्रोथ 1 year में होता है, which is very normal. Unlike other mammal, human hair growth and shading in random, not seasonal. ऐसा that is written in books. लेकिन as you know कि we see that कि विंटर के अंदर हेयर फॉलिंग बढ़ता है, इवन कई पेशेंट के अंदर मॉनसून के अंदर हेयर फॉलिंग बढ़ता है. तो दे आर बिलोंगिंग टू सम मैमल रेमेडी, क्योंकि that is seen in mammal. एनिमल्स में ऐसा देखने को मिलता है, not seen in human. तो that one thought is that, और उसके ऊपर से आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो. मैमल रेमेडी कौन सी? गाइस सो मत जाना, आज का लेक्चर लंबा चलेगा. लास्ट सेशन ले रहा हूँ, आज का ले रहा हूँ. आज हेयर फॉलिंग बेसिक खत्म करना है गाइस. मैमल्स में से कौन सी मेडिसिन है? ढूंढो. ये मैं नहीं बताऊंगा. होमवर्क. बैक टू द टॉपिक. Random number of hair will be one of the 3 stage of the growth. तो बाल के पूरे जो हेयर होते हैं वो किसी भी स्टेज में हो सकते हैं. वो एनाजन फेज में हो सकते हैं, कैटाजन में भी हो सकते हैं, और टेलोजन फेज के अंदर भी हो सकते हैं. जब भी पेशेंट हेयर फॉलिंग के साथ आता है तो कौन सा फेज हो सकता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर. एनाजन इज an active phase of hair. The cell in the root of the hair are dividing rapidly. During this phase, the hair grows about 1 centimeter every 28 days. मतलब वो एक महीने के अंदर 1 सेंटीमीटर बढ़ता है. 12 months के अंदर 12 या 15 सेंटीमीटर होता है. Scalp hair stays in this active phase of growth for at least 2 to 6 years. Why some people don't have growth of hair? तो उनका जो ये एनाजन फेज होता है, which is very less, वो कम होता है. उसकी वजह से उनकी हेयर की लेंथ नहीं बढ़ती. तो अभी आपको रिसर्च करना है. तो वन मोर थिंग इज दैट कि आप ऐसे मेडिसिन सर्च करो कि which is working on एनाजन फेज. पेशेंट आपके पास आता है कि वो बोलता है मुझे सर बाल की लेंथ नहीं बढ़ रही है. In those cases, we have to find out the remedies which specially works on एनाजन फेज. एनाजन फेज के ऊपर अफेक्ट करता है तो वो बाल की लेंथ बढ़ेगी. You are the new generation, you have to work on this. And if we are saying the patient ki homeopathy is working on nanotechnology, nano parts, so we have that explanation कि हमारी मेडिसिन वो एनाजन फेज के ऊपर काम करेगी. That clinical research we have to do. Am I right? Now the question is that eyebrows के बाल छोटे क्यों होते हैं? बियर्ड के बाद इतने लंबे क्यों नहीं होते? जेनिटल्स के बाद इतने लंबे क्यों नहीं होते? What is the reason behind that? स्काल्प के बाल बड़े होते हैं लेकिन ये आईब्रोज के इतने रहते हैं, आईलैशेस के भी इतने रहते हैं. The reason is that the enasion phase is very short. This is the reason. Because they have a short active phase of growth. On the other hand, people with very long hair have a long active phase, enasion phase. Why hair of eyebrows is not longer? This is the reason. The arm, legs, eyelashes, and eyebrows have a very short active growth phase that is 30 to 45 days only. Sir,
बोलो। समवन हैव आईब्रोज के जो हेयर होते हैं ना वो ना बहुत लाइट होते हैं, हाँ, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? वो उसका जो रूट्स होते हैं दे आर वेरी लेस। इवन आपके पास छोटे बच्चे भी आएंगे और पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारे बच्चे का ग्रोथ पहले से ही कम है, या आईब्रोज के ग्रोथ ही नहीं होता है, वो उसके अंदर हेयर रूट्स कम होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली वी सीन कि जो बच्चों के बाल कम होते हैं, थियोरेटिकल इट इज सीन कि हेयर रूट्स नहीं बढ़ते हैं, लेकिन सम ऑफ आवर रेमेडीज वर्क एक्सीलेंटली इन दोस केसेस। तो होम्योपैथी इज बियॉन्ड द फिजियोलॉजी समटाइम। आपके पास डेंसिटी कम लेके पेशेंट आ रहा है, स्पेशली ऑन लेटरल साइड, तो यू कैन यूज थूजा, दैट इज रिटन इन अवर रेपर्टरी। आई डोंट नो वो कहां से ढूंढ के आए, लेकिन विच इज रिटन इन रेपर्टरी। Alopecia or hair falling, especially at the lateral side of the eyebrows. Okay. Now about catagen. Catagen phase is a transitional phase. This phase lasts for about 2 to 3 weeks. Growth stops. अभी ये स्टेज के अंदर एंटर होने के बाद लेंथ नहीं बढ़ती है, shrinks and attaches to the root of the hair. This is the formation of what we know as a club hair. जब भी पेशेंट एनाजन फेज में से कैटाजन और टेलोजन फेज में आता है तो वो रूट से डीअटैच होके एक बल्ब क्रिएट करता है। और जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो आस्क देम कि आपके जो हेयर फॉलिंग हो रहा है उसके नीचे बल्ब जैसा है या नहीं है। That helps us to differentiate the diagnosis, to differentiate the type of hair falling. वो कौन सा टाइप है that will explain you later. लेकिन वो हैबिट डालो कि पेशेंट को पूछो कि हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें रूट्स आते हैं, that might be a white or that might be a normal in black color, whatever it may be the color, लेकिन वो है तो type of hair falling is different. Telogen is the last stage, that is the resting phase. The phase lasts up to the 100 days of hair on the scalp. Longer for hair on the eyebrows. Eyebrows के अंदर जो लेंथ नहीं बढ़ रही है उनके अंदर ये टेलोजन फेज लंबा है, opposite to anagen phase. During this phase, hair follicle is completely at the rest phase and the club hair is completely formed. Pulling out of hair in this phase reveals a solid, hard, dry, white material at the root. तो जब भी पेशेंट आपको बोलेगा कि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, उसके अंदर हेयर रूट्स दिख रहे हैं, तो वो हेयर फॉलिंग टेलोजन फेज के अंदर हो रहा है। ओके। जब भी पेशेंट ऐसा बोलेगा कि दिन के 50 हेयर फॉल हो रहे हैं, विच इज नॉर्मल, डेली 25 to 120 टेलोजन हेयर आर सेड्स नॉर्मल। पेशेंट को बोलो कि 100 से 150 तक हेयर फॉलिंग विच इज नॉर्मल, उसके लिए मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। फीमेल गर्ल्स आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेयर। आप में से ये 57 कितने कितने पार्टिसिपेंट्स है, उसमें से जितनी भी गर्ल है उसका हेयर फॉलिंग अभी होता ही होगा, दैट आई नो। वो कंप्लेन करेंगे ही कि मेरा हेयर फॉलिंग हो रहा है, लेकिन इफ इट इज इन बिटवीन द नंबर्स दैट इज नॉर्मल। Okay, till now, guys, hair cycle is clear in your mind. Anagen phase, catagen phase, telogen phase, 3 phases. ये जो cycle है, you can get it in the Google. तो आप you just find out in Google hair cycle, तो आपको एक फोटो मिल जाएगा, वो फोटो क्लिनिक पर रखो, उसकी प्रिंट निकाल के। जब मैं सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता था at that time, I used to kept that print in my clinic और पेशेंट को मैं एक्सप्लेन करता। Just kept it with you, वो रखो क्लिनिक पे। That helps a lot to gain a confidence in the patient. Anagen, catagen, telogen. Now hair falling. Type of hair falling. Most common type of hair falling, that is androgenic alopecia. Another type, that is telogen effluvium. Another uncommon, that is alopecia areata. But as a homeopath, we are getting lots of patients of alopecia areata.
Another is ringworm or fungal infection or tinea carpitis. Another is scarring alopecia, which is very rare but which is not reversible. That is where we are going to discuss. And another thing is that overuse of that cosmetics, straightening kara liya, keratin karwa liya. Nowadays, the latest thing that is something nano keratin or something new is in field. So people will come to you कि सरी मैडम ये करवा सकती हूँ आएंगे ऐसे आपके पास. हाँ, overuse of shampoos, overuse of chemical shampoos is one of the cause. Even the atmosphere is the cause. Research in hair biology and hair disease is very small field. Even research on androgenic alopecia is quite limited. Perhaps 20 years ago, there were fewer than 100 people worldwide who were working in research of hair. Recent years, they are 5 times major or 10 times major, but which is very small amount than diabetic research. That is required to do research. It is completely a cosmetic thing. But nowadays, people are very much aware about their look, about their appearance. And that is why we have to work on it. Liver तो जरूरी है लेकिन बाल बहुत जरूरी. COPD वाला पेशेंट आएगा उसको लीवर का कंसर्न नहीं होगा, उसके हेयर फॉलिंग नहीं होना चाहिए. Concomitants. Now androgenic alopecia. That is typical male pattern baldness, which is also seen in female, though sometimes that is called as female pattern baldness. क्यों होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, क्यों होता है और उसको हम क्लिनिकली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं गाइस? What male pattern baldness suffers are actually inheriting are the hair follicle with the genetic sensitivity to dihydrotestosterone. That is called as DHT. Hair follicles, they are sensitive to dihydrotestosterone, begin to shortening their lifespan of each hair follicle affected. Now, male pattern baldness is generally characterized with the onset of receding hairline and thinning crown. वो लाइनिंग कम होती है, रिसेडिंग लाइनिंग देखने को मिलती है. मुझे भी स्टेज 1 और 2 तो हो, which is very common. रिसेडिंग लाइन होती है. पेशेंट बोलेगा मेरा स्काल्प यहाँ तक हेयर थे, अब नाउ दिस इज गोइंग अप साइड, ऊपर जा रहा है. Hair in these areas, including the temples and mid-anterior scalp, appear to be more sensitive to DHT. This pattern eventually progresses into more apparent baldness throughout the entire top of the scalp, leaving only the rim of horseshoe pattern of hair remaining. That is typical like this. Can you see? Horseshoe pattern. उसके लिए एक क्लास scale है, that is called as Norwood scale. Even you can keep this in your clinic. उसका भी एक print निकाल के रखो, पेशेंट को एक्सप्लेन करो कि you are suffering from this kind of hair falling. तो ऐसे टाइप के हेयर फॉलिंग में मेडिसिन कितने चांसेस है और यू कैन गो फॉर ट्रांसप्लांटेशन, कितने चांसेस है उसको एक्सप्लेन करो. बस जब भी मेल पैटर्न बाल्डनेस की शुरुआत होती है और जिसके अंदर हेयर रूट्स आर डैमेज्ड, इन दोस केसेस होम्योपैथी और एलोपैथी, एनी मेडिसिन इज नॉट हेल्पिंग टू मच. In those cases, we can help the patient to prevent the progression of the disease. डिसीज का जितना भी प्रोग्रेशन हो रहा है उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, एंड जितने भी बाल बचे हैं उतने सेव कर सकते हैं. दैट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस. दैट इज हाँ, बच्चे हुए को बचा. That is divided into 7 parts, लेकिन up to the 5th you can differentiate that very clearly. फर्स्ट स्टेज के जिसमें फ्रंटल पोर्शन सिर्फ जाता है,
Shackled में frontal is little bit deeper at the forehead, which is going deeper. मेरा अभी तक नहीं है. If it is go deeper, then that can be considered as a type 2. इसमें भी type 2 A B है. Don't go in more detail. लेकिन superficially जब भी third stage enter होता है तो उसमें vertex में भी patch होना शुरू हो जाता है. You can see over here third stage. Vertex के अंदर एक patch हुआ है. Now that vertex patch is gradually increasing, and in the fourth stage, which is completely visible. The visible part and the receding frontal boson that is converting into fourth stage. Fifth stage के अंदर that is becoming bigger and frontal is going more deeper. तो patient को एक simple line दिखेगी between the vertex and the frontal receding. And in the sixth stage, the margin is not there. Completely, you can see the horseshoe pattern in the fifth, sixth, and seventh stage. Okay, are you with me, guys? Hello. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, what is our role? What we can do in this androgenic alopecia? Androgenic alopecia के अंदर एलोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक कैसे पेशेंट को हेल्प कर सकता है? Now, more closer to DHT. What is DHT? That is dehydrated testosterone. What kind of pathological things is appearing in the scalp area? That is, testosterone is converting into dehydrated testosterone with the help of 5-alpha 2 reductase. That is the enzyme, which is held in the hair follicles. While the entire genetic process of the male pattern baldness is not completely understood, guys, still the research is not undergoing. अभी तक main क्यों ये dehydrated testosterone में convert होता है testosterone, which is still unknown. The DHT is suppressed, the hair follicle continue to grow. आपको अभी भी कुछ रिसर्च करना है in field of homeopathy to find out the remedy which is not converting testosterone into dehydrated testosterone, or else find out some remedy which is working on 5-alpha reductase. Secretion of 5-alpha reductase is reduced, then we can help to reduce the conversion of testosterone into dehydrated testosterone. Or we can find out some remedy which is working on directly DHT, so DHT कम करे. Are you getting me? We can say the patient कि भाई internally we know कि we are treating from the symptom, but as a doctor, as a trichologist, if you are treating the patient of hair falling, you must know the normal physiology of that typical particular type of hair falling. This is the condition happening in the scalp in male pattern baldness. Now, how to diagnose and what is the treatment of dehydration of this typical male pattern baldness in the field? Two treatments are clinically proven successfully in the hair, that is male pattern baldness. That is, first is finasteride. Finasteride is a generic name of brand. The name drugs Propecia. Propecia is most commonly used brand contain having finasteride. Finasteride was originally developed by the company as a drug to treat enlarged prostate hypertrophy. This is the accidental research, guys. You know that Veltum F is the commonly used medicine of benign prostatic hypertrophy. और उसमें जो F है, F factor, F, that is finasteride. When the company is doing research in benign prostatic hypertrophy, in 70 or 50% patient of benign prostatic hypertrophy having hair growth on unexpected parts, doing the research, wild research.
तो उसके बाद company claimed that this finasteride is helping the patient to treat the alopecia, and FDA approved that finasteride as a oral medicine of androgenic alopecia. Are you with me, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes. This is Veltamab for finasteride. Now, finasteride, how it works? Finasteride has success due to its ability to specifically inhibit 5-alpha reductase. Finasteride 5-alpha reductase को reduce करता है. That is why testosterone is not converting into testosterone. That is, if you are interested to prescribe in your clinic, that is Propecia 1 mg, or you can simply name finasteride 1 mg, can effectively load DHT levels by much of 60% when taken daily. It is DHT that shrinks and miniaturizes the hair follicle, which eventually leads to baldness. Generally, ऐसा होता है. 65% of trial participants experienced what was considered a substantial increase in hair growth. I am talking about that research of benign trials. So homeopathy में कौन सी ऐसी medicine है which works on prostate, simultaneously works on hair fall? During the research, we got Sabal cerulata. Sabal cerulata is prepared from, किसमें से बनती है guys? Saw palmetto. Yes, that is prepared from saw palmetto. So saw palmetto is used in hair falling since years in Ayurveda, and that our remedy Sabal cerulata we are using in potentized form for benign prostatic hypertrophy. So finasteride in homeopathy, that is Sabal cerulata. Even we done research on patient for that Sabal cerulata mother tincture externally, and it helps a lot to the patient. You just start using that Sabal cerulata in your practice as an external application, and we are the only manufacturing who are using Sabal cerulata along with arnica and jaborandi in hair oil and shampoo. This was my MD during MD clinical research. Another remedy, that is minoxidil. You all must be aware with this name. That is minoxidil, used externally for typical androgenic alopecia. Minoxidil 1% आता है, 5% आता है, 9% आता है. In market, you can use it. It's external. This is the typical alpha blocker hypertension, alpha 2 blocker hypertension, which was used before for the hypertension, but now it is used externally as a hair falling remedy. Now, what are the natural DHT blockers? कौन से DHT normal DHT blocker? As I told you, saw palmetto. Another is pumpkin seed. Pumpkin seed, maximum pumpkin कहाँ देखते हो? Halloween's party. Halloween. Yes. Another, that is tea tree. अभी homeopathy के अंदर बहुत लोग are using this tea tree as a component in hair oil and shampoo. Pumpkin seed is also there, as we already told, and sesame seed. These are the things that helps as a DHT blocker. So if you are prescribing natural things, then you can ask the patient to use its seeds extract and make some solution, and you can externally apply. Excuse me, sir. Bolo, bolo. Sir, one doubt, sir. Generally, in androgenic alopecia, I have observed mostly sebaceous sebaceous glands overproduction, sir.
if we give the oil to apply externally on the scalp, I have observed in most cases dandruff बड़ा होता है, and the complaints are gradually increasing, sir, but not decreasing, because due to overproduction of sebum and hair and scalp is more greasy than compared to the previous. What to be done, sir? Then? First of all, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वाले हर एक पेशेंट को एक्सेसिव सीबेसियस सिक्रीशन हो, दैट इज नॉट सीन. जब भी एक्सेसिव सीबेसियस सिक्रीशन वाले पेशेंट आते हैं, सीबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ वाले पेशेंट, वी आर नॉट एडवाइजिंग देम टू यूज कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल से जनरली स्केलिंग बढ़ती है, तो डोंट एडवाइज पेशेंट टू यूज कोकोनट ऑयल. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन आस्क द पेशेंट कि और कोई नॉन स्टिकी हेयर ऑयल यूज करो, विच इज अवेलेबल इन मार्केट इफ इट इज रिक्वायर्ड. अदरवाइज जो एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है, तो पेशेंट को ऐसा बोलो कि हेयर ऑयल यूज नहीं करना है, सिंपली यूज एंटी डैंड्रफ शैम्पू. दिस इज एडवाइस, दिस काइंड ऑफ एडवाइस वी आर गिविंग टू द पेशेंट इन आवर क्लिनिक. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि सीबम सिक्रीशन ज्यादा हो, इफ द पेशेंट इज यूजिंग ऑयल तो उसका स्केलिंग बढ़ जाता है, विच इज क्लिनिकली सीन, वो होता ही है. तो ऐसे पेशेंट के अंदर डोंट एडवाइज फॉर हेयर ऑयल. Sir, irrespective of oils, and I have observed serums also, sir, while applying any minoxidil serum also, or any tree oil is there, no, sir. In that also, it causes somewhat greasiness, sir, on the scalp. Definitely. Basically, that is the oily thing. So sebum is already oily. तो जब भी उसके ऊपर आप ऑयली सब्सटेंस या कुछ भी लिक्विड अप्लाई करोगे तो ऑलरेडी बढ़ने वाला है. इवन समटाइम्स व्हाट हैपन, पोर्स गेट स्टक, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को कंजेशन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से इचीनेस बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ जाता है. तो डोंट एडवाइज सीबोरिक डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट या एक्सेसिव डैंड्रफ वाले पेशेंट कि हेयर ऑयल मत यूज करो. और जब भी पेशेंट मिनोक्सिडिल यूज करता है तो उसके बाद पेशेंट की इरिटेशन बढ़ती है इन स्काल्प. Okay. तो ऐसे पेशेंट को फिर मिनोक्सिडिल का कोई यूज नहीं है, गो विद इंटरनल मेडिसिन. Okay. Thank you. We used in our clinics sebal cerulata, that is so palmetto, and we got almost 50% to 70% patient get helps in growing hair in typical androgenic alopecia. एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में FDA अप्रूव्ड ये दो ही मेडिसिन है, नॉन अदर देन दिस टू रेमेडी हेल्प्स अ लॉट. ज्यादा हेल्प नहीं करती. इंटरनली और होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प्स, वो हम डिस्कस करेंगे इन थेरेपेटिक पार्ट, लेकिन दिस इज अबाउट टुडेज एरा कि अभी जितनी मेडिसिन अवेलेबल है. नाउ वी आर यूजिंग सेबल सेलुलोटा एक्सटर्नली एंड इट हेल्प्स अ लॉट द पेशेंट. आप भी आपकी क्लिनिक पे यूज कर सकते. You can use mother tincture, लेकिन mother tincture पेशेंट को इरिटेशन करता है, एज डॉक्टर टोल्ड कि मिनोक्सिडिल भी इरिटेट करता है, तो मदर टिंचर के अंदर तो अल्कोहल ही होता है, तो इट ऑलरेडी इरिटेट्स द स्कैल्प और पेशेंट को इचिंग बढ़ जाती है. तो उसकी वजह से यू कैन यूज इट इन ऑयल एंड शैम्पू. वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर. मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, वी आर गिविंग इट इन 50% डिस्काउंट टू ऑल द होम्योपैथिक डॉक्टर्स, so you can buy it. Even last time का सेशन के बाद मैंने एक फोटो भी शेयर किया था. Just contact on that number. Now, what is the permanent cure of androgenic alopecia? अभी ये homeopaths are nowadays using that trichoclinic or trichologist word in their clinic, जहाँ पे वो एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, 1 और 130 के आसपास लेग का एक इंस्ट्रूमेंट आता है. उसके हेल्प की वजह से you can use the transplant, you can do the transplantation if you do certificate course, and if that certificate course is allowing you, so you can practice such things in your practice. करते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है. We can do anything for earning. हमारे पास सर्टिफिकेट है तो you can do it. सलून वाले करते तो डॉक्टर क्यों नहीं कर सकते? Hair transplantation is the permanent cure of androgenic alopecia. जो पेशेंट को टिपिकल बाल्डनेस हो गई है, 5th या 6th स्टेज में एंटर हो गया है पेशेंट, तो डोंट गिव अ रॉन्ग फेट टू द पेशेंट को बोलो जितना है उतना बचाते हैं, बाकी जो आपको ग्रोथ करना है
then you can go for transplantation. PRP is the one of the treatment लोग करवाते हैं, which is not that much helpful, लेकिन लोग करते हैं. 50,000 70,000 की ट्रीटमेंट होती है, 5-6 सिटिंग होते हैं, प्लाज्मा लेके वहां पे इंजेक्ट करते हैं और they claim that it helps to grow the hair, लेकिन मैंने ऐसे पेशेंट अभी तक नहीं देखे. Hair, 2 types of transplantation is done in nowadays. One is follicular unit transplantation, which is nowadays very common, and follicle and unit extraction. No, sorry, there is old one, FUT, जो पूरा पैच निकालते थे and they applying on the scalp, in the other part जहाँ पे बाल नहीं है. Nowadays, what is the procedure? एक follicle निकालते हैं और follicle is implanted or transplanted. This is the only transplant procedure के जिसके अंदर donor is same donor का ही root use होता है. Last time हमने यहाँ तक लिया था. Now we are going towards another type, that is trichotillomania. Trichotillomania is not that much common, but as a homeopath, we are getting lots of psychiatric patients. And if patient is suffering from any psychiatric condition, so along with the psychiatric condition, we are getting that trichotillomania. ये क्या है? Patient having addiction or patient having habit to pulling their own hair. Patient thought procedure में है या कहीं पे भी बैठा है, तो he is not even only playing, they are pulling their hair. Girls are habitual to play with their hair, लेकिन this is not playing with hair, this is the typical pulling the hair. और उसकी वजह से patient को baldness भी आ जाती है, which is very common. Trichotillomania can create baldness or particular part. Trichotillomania is a condition in which the affected individuals plucks out their own hair. Often the hair on the scalp is plucked to leave bald patches. But the individuals may focus on the eyelashes, eyebrows, pubic hair, or even other hair bearing region. कहीं पे भी वो हो सकता है, eyebrows का, eyelashes का, or even scalp, or even genitals. There is much argument about whether trichotillomania is a habit like a nail biting or a more psychological problem, which is not yet decided. It is simply a habit like nail biting, or it is a psychological problem. Either way, affected individuals are usually not aware that they are plucking their hair. And when they are made aware of it, they often find it very hard to stop. उनको कई बार पता ही नहीं होता है, एक पैच क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपके पास पेशेंट आता है या रिलेटिव ने देखा वो लेके आता है. Otherwise, if they are aware but they are not able to control on it, that is like habit. So it is sometimes quite difficult to treat trichotillomania. That doesn't mean it is not curable. Constant counseling करो patient का. Along with that, give our medicines. This is the very dangerous condition that needs to be treated with some urgency. I am talking about eating of hair. Some individuals who pluck their hair also then eat it. That is called as. Sir, excuse me. Sorry बोलो, to interrupt. बोलो. Sir, there are some students who are still not connected and they're texting on WhatsApp. So please let them in. Sure. Last time this one. I'm talking about trichophagia. जिसमें स्टूल खाते उसको क्या? Anyone of you know? If patient is eating stool. Guys, what is called? Desire to eat stool. Guys. क्या प्रोफेजी सर? क्या प्रोफेजी?
Sorry. Caprophagy. Yes. Yeah. Have you ever seen such kind of patient in your clinical practice, or have you ever heard such things? No, sir. Desire to eat stool. No, sir. This is very common in animal, especially when you are practicing on animals. तो उसके क्या टक्कर हो गए? Just does tell you कि nowadays he or she was, they are very aware, they was very loving to their pets, तो नाम से ही बुलाते हैं. तो he or she is eating stool, so which is not common in human, but when you are treating animals, so you will get such symptoms. Yes, trichophagia, which is very dangerous condition. Hair is not digestible in stomach, basically. It can build up into the hair ball. This can severely irritate the stomach lining, leading to severe ulceration. It is possible to die from trichophagia. Treating trichotillomania is difficult. Therapeutics can probably help more than dermatologists. In those cases, homeopaths are dermatologists, homeopaths are psychologists, homeopaths are physicians. So as an all-rounder, one-man army, we can treat such patients in our clinic. Rubrics, and when we are talking about rubrics, head के अंदर, hair के अंदर pull दी, hair pull दी. Leading to remedies, 3-mark remedies, that is piperomate and belladonna. We have treated one patient with such condition having coughing. मेरे पास एक patient आया था, उसको coughing के साथ vomiting हो रही थी, and along with that, mother ने observe किया था कि since coughing started, he is pulling his hair. I used piperomate. उस दिन मुझे पता चला कि हेयर पुलिंग के अंदर पिपरोमेट इज 3-mark रेमेडी. उसकी खांसी भी मिट गई और उसका हेयर पुलिंग भी मिट गया. This is the beauty of homeopathy. Another remedy, you can use stramonium, you can use calendula, you can use hyoscyamus and belladonna. These 4 leading remedies, which is even not mentioned in repertory, but this type of people having this kind of desire to pulling the hair. Even you can use tuberculinum as a complementary. And natramur, which is not mentioned in repertory, but when we are talking about psychology, psychiatric condition, nail biting, hair pulling, natramur is leading remedy. Mind pulling hair, another rubric, that is belladonna, lilium teak, 2-mark remedies, cantharis, digitalis, thecasis, stramonium is mentioned over here, tarantula, tube, and veneter. जितने भी psychiatric remedies है in our homeopathy, we can use. One case is there, that is trichotillomania. The boy having a constant desire to pull his eyelashes hair, और जब भी सुबह उठता था तो उसके eyelashes कम हो जाती थी. मदर उसको लेके आई थी कि he is having that kind of habit. Natramur was given to this child, and उसका जो ailment था, that is from school change. उसने जब school change किया and separated from friends, तो उसकी वजह से hair falling, yeah, that habit begins, and that is why Natramur was constantly thinking about old friends and constant thoughts in mind. Another remedy for such condition, when आपके पास patient आता है और उसने school change किया हो या उसने city change किया है, nowadays which is very common. बैंक में father job करते हो या फिर कोई corporate company में job कर रहे हो तो बैंगलोर से पुणे से अहमदाबाद या कोई भी जो cities है वहाँ पे switch over होते रहते हैं. So in those cases, you can use Califos.
which is told by Sunimar Sarkar. And even we used in our practice कि Califos helps in such condition. You can use Califos in potentized form 1M in those बच्चास. उसके बाद ailment हुआ, उसके बाद शुरुआत हुई behavior changes की या कोई भी physical symptoms की. In those cases, you can use Califos along with Natrium. Natrium is why in Califos 1M में आप use कर सकते. मेरे पास एक पेशेंट आता था जिसने स्कूल चेंज की, उसके बाद कांस्टेंट नोजिया और वॉमिटिंग, व्हिच इज वेरी कॉमन. बच्चा जब भी साइकेट्रिक कंप्लेन के साथ आता है तो उसका नोजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेन होती है. जब भी आपके पास कोई नोजिया और वॉमिटिंग वाले पेशेंट आते हैं, ही इज साइकेट्रिक, देन डोंट फॉरगेट टू रूल आउट एब्डोमिनल माइग्रेन, व्हिच इज रेयर कंडीशन बट व्हिच इज सीन इन बच्चास. Abdominal migraine. Kept that term in your mind to differentiate the condition. Gastric cause नहीं है, आपने CT scan करवा लिया, which is normal. Pediatric gastrologist के साथ आपने endoscopy करवा ली, फिर भी patient having that nauseative feeling and no GERD, कुछ नहीं है, that having headache with the nauseative feeling, तो migraine के साथ साथ you can think of gastric migraine. Remedy is IRIS-V, yes. Okay, this is one type of hair falling which is not seen frequently in practice, but when you get such patient and you use such remedy, you will get result. Now, another most common type of hair falling, that is telogen effluvium. आपके पास हेयर फॉलिंग के जितने भी पेशेंट आते होंगे, उसमें से 30% पेशेंट एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के निकाल दो तो मोस्ट कॉमन थिंग दैट इज telogen effluvium. Wait a minute. You can see the transit recording on the caption. Okay. Now telogen effluvium. जो हम बल्ब की बात कर रहे थे, मैं बारी बारी रिपीट कर रहा था, that bulb is seen in this kind of hair falling. Telogen effluvium is probably the second most common form of hair loss in homeopathy C. If the number of hair follicles producing hair drops significantly for any reason during the resting, that is telogen phase, there will be a significant increase in dormant telogen stage hair falling. What is happening? जब भी एक शॉक लगता है या विटामिन डेफिशिएंसी होती है, anything might be the cause, उसके बाद बहुत सारे hair are converting into telogen phase, that is in shading phase, that is in dormant में चले जाते हैं, और उसकी वजह से जो टिपिकल हेयर फॉलिंग होता है, that is telogen effluvium. जब भी आपके पास पेशेंट आता है और बोलता है कि I have a hair falling with lots of bunch, मैं हेयर में हाथ डालूं तो बंच में बाल हाथ में आते हैं, that is called as shedding. एक साथ बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, that is seen in telogen effluvium. This is the common cause of hair falling. We caught such patients frequently in our practice. How we can differentiate the androgenic alopecia from that telogen effluvium? Telogen effluvium के अंदर hairline recession नहीं होता. मैंने androgenic alopecia initially इसीलिए लिया कि you can differentiate telogen effluvium from androgenic alopecia. वो जो typical hairline recession होता है, which is not seen in telogen effluvium. Are you with me? From this point, Yes, can you differentiate from the appearance of the patient that androgenic alopecia from telogen effluvium? Guys, can you differentiate such thing?
Yes, sir. Another thing, that is, shades hair are typical telogen hair which can be recognized by small bulb of keratin at the root end. रूट एंड के अंदर कैरोटीन का एक छोटा सा बल्ब होगा, which we already discussed. That bulb, if present, then patient के hair falling is occurring in telogen effluvium. Explain the patient. उसका cause क्या है, क्यों हो रहा है, patient को explain करो. Then and then only patient having gain confidence in you. बहुत सारे लोग हेयर फॉलिंग पे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे सलून के अंदर हेयर फॉलिंग ट्रीट होता है, लेकिन दे डोंट हैव दैट नॉलेज, डीप नॉलेज ऑफ दैट पार्ट. Small bulb if it is seen, we can tell the patient that this is typical telogen hair falling. That bulb can be pigmented or can be unpigmented. Whatever, that doesn't matter. White ho ya black. If the bulb is there, that is telogen. Best part of telogen effluvium is to get to patient को confidence में लेने के लिए, it is the fact कि this is not creating complete loss of hair. Patient को baldness नहीं आएगी, but it can create a very less density. Patient की density बहुत कम हो जाएगी. That is why it is required to treat. Whatever form of hair loss telogen effluvium, it is fully reversible. Telogen effluvium के भी 3 type है. Whatever it may be the thing, that is completely reversible. तो हमारे पास जितने भी telogen effluvium वाले पेशेंट आते हैं हेयर फॉलिंग के साथ, तो you can confidently tell them कि आपका हेयर फॉलिंग कंट्रोल हो जाएगा. कितने टाइम में पेशेंट ऐसा पूछेगा, which is the most common question of patient. तो क्या बोलोगे आप, कितने टाइम में? Any answer you have? So 5 to 6 months. Why? So because hair cycle is of minimum 3 to 4 months. Yes. Telogen phase का जो टाइम है, let me show you. That time of telogen phase is 2 to 4 months. So approximately patient को बोलो कि if we consider that the all hair of your scalp is converted into telogen phase, तो minimum 2 to 4 months लगेंगे. ये जो बाल टेलोजन फेज के अंदर आ चुके हैं, which is not able to attach again, but हम मेडिसिन से क्या करेंगे, ये जो टेलोजन फेज के अंदर बाल गिर रहे हैं और वो फेज के अंदर में से जो एनाजन फेज के अंदर नया बाल आएगा, उसका फेज बढ़ाएंगे और उसकी वजह से आपका हेयर ग्रोथ होगा. जो टेलोजन फेज के अंदर ऑलरेडी बाल आ चुका है, which is not reversible, लेकिन उसके अंदर से जो नया बाल आएगा वो ग्रोथ करेगा. तो जब भी आप टेलोजन इफ्यूजन वाले पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, तो पेशेंट को समझाओ कि जब भी आप मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हो, तो इनिशियल स्टेज के अंदर विद मेडिकेशन भी हेयर फॉलिंग हो सकता है, क्योंकि जितने भी बाल टेलोजन फेज के अंदर है वो वापस ग्रो नहीं होगी, तो वो गिरने ही वाले हैं. लेकिन उसका जो टाइम है, दैट इज 2 to 4 months, तब तक वो गिरेंगे. लेकिन वो जब बाल एनाजन फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो बाल आपके नहीं गिरेंगे. When you initially start the treatment, initially 2 to 3 months approximately hair falling हो सकता है along with medication. वो gradually कम होगा, लेकिन हो सकता है. Are you with me, guys? Yes, sir. मत जाना. Yes, sir. Now,
What are the causes of creating telogen effluvium? Any one of you guys? कौन से causes है telogen effluvium? One is environmental insult, that is called as shock. Hair follicle so much that they decide to go into the telogen phase for a while due to that shock. This results in an increase of hair shedding. This form of telogen effluvium can develop rapidly and may be noticeable 1 or 2 months after receiving the shock. वो shock कोई भी हो सकता है. That shock can be delivery. That shock can be weight gain, weight loss. That shock can be even mental. Patient को insult हुआ, patient का कोई रिलेटिव की डेथ हुई, या पेशेंट को कोविड हुआ या डेंगू हुआ या कोई भी एक डिसीज हुआ, इवन स्लाइटली यूज ऑफ एंटीबायोटिक, दैट कैन बी शॉक फॉर द बॉडी, और उसके बाद एक प्रकार का हेयर फॉलिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेलोजन इफेक्ट. आर यू विद मी? सो that telogen effluvium वो शॉक के बाद हो रहा है, तो that is good to treat क्योंकि उसमें exciting cause है. Now come to organ one. Exciting cause and maintaining cause वो हम पढ़ते थे. I am not good in homeopathy, but nowadays allopathic doctors and other doctors are believing in that exciting cause and permanent cause. This is the exciting cause. उसके बाद ट्रिगर हुआ है. उसके बाद ट्रिगर हुआ है. In those cases, exciting cause is only there, which is not a maintaining cause. सिगरेट की वजह से खांसी आ रही है, that is constant maintaining cause. Maintaining cause मिटेगा तो ही सिगरेट की वजह की खांसी मिटेगी. कम हो सकती है, लेकिन क्योर नहीं हो सकती. लेकिन दिस इज अबाउट एक्साइटिंग कॉज. एक बार शॉक लगा फिर वो खत्म. persistent शॉक नहीं है. if the persistent shock is there, that is in another part, that is persistent triggering factor, that is another type of telogen effluvium. लेकिन I am talking about exciting cause. This form of telogen effluvium usually last less than 6 months. तो जब भी डिलीवरी के बाद आपके पास फीमेल आती है, so this kind of hair falling generally happen after the event 2 to 3 months के बाद शुरू होता है. पेशेंट बोलेगा कि आज मेरा डिलीवरी को 9 मंथ हुए, तो सर वो तो 3 महीने से ही मेरा हेयर फॉलिंग शुरू हुआ है. तो एक्सप्लेन देम कि दिस काइंड ऑफ हेयर फॉलिंग is generally occurring 2 to 3 months after the event. Q that I don't know, which is not written in any book, in Google I searched it, but reason I don't know. This is generally happen after 2 to 3 months, and this last up to the 3 to 4 months. तो पेशेंट को बोलो कि ये आपको डिलीवरी के बाद हो रहा है हेयर फॉलिंग, या कोविड के बाद हेयर फॉलिंग हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हेयर फॉलिंग है वो 2 to 3 मंथ्स के बाद शुरू होता है और 4 या 5 मंथ्स तक चलता है. लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि आपको बाल्डनेस नहीं होगी, तो डोंट गेट स्ट्रेस ऑफ इट. और उसकी बुरी बात यह है कि उसमें डेंसिटी कम हो जाएगी. दैट इज व्हाई वी हैड टू ट्रीट इट. अदरवाइज दैट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल. वो अपने आप भी अच्छा होने वाला है, लेकिन वो डेंसिटी कम होके अच्छा होगा. That is why it is required to treat. Now, persistent triggering factor in our organelle, that is maintaining cause. Slowly, persistent and longer. Patient is suffering from stress, patient having lots of socially or economical stress, then that kind of telogen effluvium is difficult to treat. जब तक maintaining cause होगा, तब तक telogen effluvium वाले पेशेंट को ट्रीट करना is quite difficult. Hair follicles may enter into telogen phase as they normally would
But instead of returning to the new erosion stage after a month or two, they stay in the telogen phase for a prolonged period of time. Telogen phase के अंदर लंबे टाइम तक बाल रहता है. That is why maintaining cause must be treated along with the hair fall. Stress वाला patient आपके साथ आ रहा है with the chief complaint of hair falling. तो along with hair falling, we have to treat the stress. स्कूल की एक बच्ची है कि जिसको उसकी फ्रेंड परेशान करती है, 3 महीने से उसको चुगलियां करती है और उसके बाद उसका हेयर फॉलिंग शुरू हुआ है, तो मदर को बोलो कि स्कूल में कंप्लेन करे और अलोंग विद दैट कुछ ऐसा अरेंज करे कि वो फ्रेंड्स के साथ ना रहे. जब तक वो मेंटेनिंग कॉस्ट नहीं होगा तब तक आप हेयर फॉलिंग नहीं बचा पाओगे. दिस इज द सिंपल थिंग. तो that is why history is required. पेशेंट की A to Z चीज हमें जाननी पड़ेगी. Third type of telogen effluvium, the hair follicle do not stay in erosion phase. When it happens, the individual experience the scalp hair and the persistent shedding of short thin hair fibers. उसके बाद short हो जाते हैं. वो भी permanent maintaining cause ही है, nothing else. लेकिन these two types are very important, very much important. Now causes. Classic short-term telogen effluvium often happens to women soon after giving birth. Birth के बाद, which is very common. That is called as postpartum alopecia. कौन सी मेडिसिन है इन होम्योपैथी गाइस? Hair falling ailment after delivery. CPR. Yes. Any complaint after delivery, that is sepia. Even hair falling after delivery, that is sepia. Or another cause, that is vaccination. कोविड वैक्सीन के पास आपके साथ बहुत सारे पेशेंट आते होंगे having hair falling, which is very common. Ailment after vaccination, guys. Cause पकड़ो. पेशेंट की हिस्ट्री में कॉज लेना है. कहां से हेयर फॉलिंग? पेशेंट आपके पास शेडिंग लेके आया तो पूछो कि 3 या 4 महीने पहले कोई इवेंट हुई थी, 6 महीने पहले, 1 साल पहले कुछ हुआ था कि उसके बाद हेयर फॉलिंग शुरू हुआ. If we got the ailment, that is telogen effluvium. Vaccination, ailment after vaccination, कौन सी मेडिसिन? पूजा. Silesia and Thuja. Thuja and Silesia. Silesia. okay. Hepar sulfate. I don't know. Okay, and another remedy? Antimonium tart. Okay, antimonium tart is one of the remedy having ailment after vaccination. Okay. Melandrinum. Yes, another remedy, that is melandrinum. If patient came, अभी बहुत सारे patient आएंगे having skin issues after vaccination. आते हैं आपकी clinic पे. You can use Thuja, along with that you can use melandrinum. Melandrinum having ailment after vaccination or typical skin eruptions. You can use this remedy, guys. Melandrinum. Another cause is or ailment, that is crash diet. Nowadays, people are very much aware for the health, and people are doing lots of things for their health. So diet, that is typical keto diet or intermittent diet, which is nowadays in trend. जिसके बाद भी हेयर फॉलिंग होता है. तो आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, पूछो वेट लॉस हुआ है, वेट गेन हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है. If he or she done a diet, then उसके बाद भी हेयर फॉलिंग हो सकता है. हीमोग्लोबिन although is normal, उसके पैरामीटर्स नॉर्मल है, लेकिन that considered as a shock for the body, और उसके बाद हेयर फॉलिंग शुरू होता है. Physical trauma, anything, any accident, car accident, anything we can consider. Surgery, any surgery हुई और उसके बाद भी हेयर फॉलिंग हो सकता है. Sir, what medicine can we give if the patient is having crash diet and after that hair fall is caused? I'm coming to that. China, carbohydrates, all the things, क्योंकि that is considered as a loss of flesh, तो उसके बाद China and carbohydrates help करती है.
I'm coming to the therapeutic part. Now, more persistent insult can result into more persistent anguish. Constant insult हो रही है, constant social stress है, सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, that can be a cause. तो सास को हमें मार देना नहीं है, लेकिन पेशेंट को तैयार करना है कि उसकी सास बोलती रहेगी, उसका नेचर ही ऐसा है, उसको हम चेंज नहीं कर पाए. That is affecting you. वो सास बोल के चली जाती है, लेकिन आपको परेशान करता है, तो माइंडसेट चेंज कर. And that helps, that counseling helps. और सास आ रही है तो बहू के ट्रिगरिंग, दैट इज वाइस वर्सा, दोनों का चलता रहता है, आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में. डाइट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो दैट इज वन ऑफ द कॉज. क्योंकि जब भी हेयर फॉलिंग वाले पेशेंट जीपी लेवल पे आते हैं, तो वी आर यूजिंग मल्टीविटामिन्स. तो इन मल्टीविटामिन्स आर हेल्पिंग इन टेलोजेनिक फ्लूइम ओनली. वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में कोई मल्टीविटामिन हेल्प करने वाली नहीं. Sir, do we have any kind of homeopathic multivitamin? No, 5-Force. not at all. Yeah, I've heard about 5-Force. 5-Force is one of the good remedy, लेकिन we don't consider it as a multivitamin. That is basically 5 calcarea force और वो जो force है ना biochemical. बच्चों के growth के लिए that helps. Basically, biochemic is multivitamin of homeopathy, but we can't replace B12 and D3 with homeopathy. Yes, yes. तो जब भी B12 100 लेके आ रहा है पेशेंट, तो ask the patient कि go with injection. Less than 100 है तो go with injection. 200 है तो medicine लो. We can't supplement our biochemic with the B12. आप 6 महीने दोगे फिर भी B12 ऐसा रहेगा, तो फिर पेशेंट 6 महीने तक सफर होगा. तो don't give our 5-Force, give our calcarea force, calcarea floor. You can prescribe it, लेकिन along with the multivitamins. Multivitamins तो देनी. वो सब maintaining dose है. Yes. जिंक दे सकते हो, एमिनो एसिड्स दे सकते हो. प्री वर्कआउट में जो भी एमिनो एसिड्स आते हैं ड्रिंक्स के अंदर, पीपल आर यूजिंग B12, B6. दिस आर द डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से भी हेयर फॉलिंग होता है. एंड द अनदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर फॉलिंग, टेलोजेनिक फ्लूइम, दैट इज थायराइड. हेयर फॉलिंग एक्सेसिव लेके आपके पास आज पेशेंट आता है, तो उसका TSH चेक होना चाहिए, उसका हीमोग्लोबिन चेक होना चाहिए. पेशेंट आपको फील हो रहा है कि पेल है, तो गो विथ रिपोर्ट्स. इफ द कॉज इज दैट डेफिशिएंसी, तो हमारी मेडिसिन विल नॉट हेल्प मच. सिम्प्टोमेटिकली रिलीव करेगा, लेकिन विटामिन तो रिप्लेस करने ही पड़ेंगे. तो जितने भी थायराइड वाले पेशेंट हैं, उनमें बाय डिफॉल्ट हेयर फॉलिंग तो आएगा ही. 1/3 of individuals with thyroid disorder having telogenic fluid. As an environmental insult passes and the body recovers, at the telogenic fluid subside and there is new hair growth. अच्छी बात. These are the causes, guys. तो जो भी विटामिन डेफिशिएंसी के साथ आता है, तो cause is the type of alopecia is telogenic fluid. Okay. Now homeopathic remedies. Hair falling delivery after. In repertory, the remedies are lycopodium, platina, and sulfur. Sepia is given in 2 ml, but we are using sepia frequently in our practice. And as a complementary, we can give sulfur to the patient. Generally, ये 2 मेडिसिन से आफ्टर डिलीवरी वाले पेशेंट को रिलीफ हो जाता है. If patient is suffering from post delivery or post partum depression, in those cases even sepia helps. Carbovage in China is always there, even natramur is always there, but these 2 are the leading remedies, sulf and sepia. In platina is there, but when you Sir, prescription, sir. Generally, we are giving sepia every week in 1 m potency and sulfur every week or every 15 days repetition in 1 m potency if needed. You can use carbovage along with, if you are practicing polypharmacy,
So we are giving Carbovage 200 TDS along with this prescription. That helps a lot to patient. अभी पेशेंट को डिजीज के बाद हुआ है या कोविड के बाद हुआ है, then remedies are Carbovage, Mancinella, and the leading remedy is Thallium metallicum. कोविड के बाद बहुत सारे पेशेंट आए हैं जिसके लिए हमने Thallium metallicum यूज किया. It works actually without any doubt. The prescription? Thallium metallicum every week in 200 potency. Along with that, give Carbovage 200 TDS. If patient is suffering from some mental issues, then you can use Mancinella rather than using Thallium metallicum. Mancinella in 200 potency every week. Hair falling after grief. Stress के बाद जो कोई भी complaint है, तो Netramure is the leading remedy, but don't forget acid phos. Both having desire for salt and having ailment after mental shock. First physical weakness, then mental weakness. That is, guys, first mental weakness, then physical weakness. That is acid phos. And first physical weakness, then mental weakness, that is acid phos, and first mental weakness, then physical weakness, that is kali phos. This is the two differentiating point of weakness in patients. Sir, repeat, please repeat, sir. Mental shock लगा और उसके बाद कोई complaint हुई, तो along with Netramure, we can think of acid phos. Mental weakness, mental shock, उसके बाद physical weakness. Yes. Sir, you said physical. I was confused because this is the right thing. After mental shock, तो mental weakness के साथ साथ उसके बाद physical weakness आ रही है, तो think of acid phos. And physical weakness के बाद जब mental weakness आ रही है, तो think of kali phos. I will again confirm in medicine and will share you the things. Acid phos are in first mental weakness, then physical weakness, that is acid phos. And पहले physical weakness आती है, then mental weakness आती है, then think of kali phos. Okay? I was talking about platinum. जब भी आपके पास गायनेक पेशेंट आते होंगे, even pregnancy during, one thing is that पेशेंट आपको बोलेगा during pregnancy per vaginal examination डॉक्टर करता है, then patient is not allowing doctor to examine per vaginal. एक stimulant आता है, during intercourse तकलीफ नहीं होती है, लेकिन पेशेंट जब डॉक्टर जब इंट्रोड्यूस करता है फिंगर, then patient having issue. In those cases, use the platinum. We are frequently using this remedy. जो patient are not allowing doctor to go for per vaginal examination. डॉक्टर ऐसा बोलेगा जो आप पर vaginal examination ही नहीं कर पा रहे हो, करवा देते हो, तो आपकी हम नॉर्मल डिलीवरी कैसे करेंगे? ऐसे पेशेंट के अंदर यूज प्लेटिनम. Yes, vagina is very much sensitive and mental ego is that much, they are not allowing anyone to touch. This is the combination, physical thing and mental thing. Heart is very much sensitive. So we were grief after, acid phos, Netramure, even Ignatia. How will you differentiate Ignatia from Netramure? Natramure is not expressive, sir. Yes, Polo. Sir, Natramore is not natrum, expressive. One by one. Please. sir, natrum is really sad and cries. Ignatia is the drug which is controlled by everyone, and she says, मैं सबका सुनती हूँ, लेकिन everyone hurts me.
ओके सर इग्निशिया जो होगा ना, वो पेशेंट जब भी आएगा ना, तब वो उसका कंप्लेन ग्रीफ जब एक्सप्लेन कर रहा होगा ना, तब वो उस हिसाब से कर रहा होगा कि उसको ना अभी भी लाइक वो प्रेजेंट कंप्लेन में हो ना, लाइक अभी मेरे साथ ना वो चीज कल ही हुई, બાકી વર્ષો પહેલા થઈ ગઈ હોય તો બી વાંધો નહીં, પણ એને એવું જ થશે કે એ વસ્તુ મારી જોડે કાલે જ થઈ છે. ओके યા ओके और Natromore is not expresses, sir. Silent cry. ओके Ignitia has a loud cry and sighing is there. सॉरी Involuntary sighing is there. इनवॉलंटरी Sighing, sir. Like that. ओके ओके deep hyperventilation syndrome, that is Yes, sir. Yes. okay SIG and इतना सब डिफिकल्ट नहीं, कॉमन सा बताओ. बोलो what is the difference? Ignition is acute grief, Natromure is chronic grief. ऐसे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन when patient come to you of Natromure, Ignatia is a person having lots of dignity, तो वो आपके पास आएगा तो he or she, even Natromure is not explaining their sorrow, their pain, लेकिन Ignatia never cry even in alone. इग्नेशिया के फादर ऑफ हो गए हो, इग्नेशिया के फादर मर गए हो, फिर भी इग्नेशिया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है तो वो रोता नहीं है, even not in alone like Natromure. Ignatia is that much with responsibility, with dignity. Dignity is more prominent in Natromure. Natromure का एलिमेंट डिग्निटी लॉस होने से ही आता है. उसको बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे क्यों छोड़ा, वो मुझे कैसे छोड़ सकता है. मैं एक फंक्शन में गई थी, वो फंक्शन के अंदर मुझे नीचे बैठाया. That dignity affecting to the Natromure. We can use Ignatia and followed by Natromure, लेकिन when the acute case is there, use Ignatia. लेकिन जब भी ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन पेशेंट की आंख में जरा सा भी आंसू आ गया, दिस इज व्हाट वी यूज इन प्रैक्टिस, यूज Natromure. इग्नेशिया के आंख में आंसू नहीं आएगा, दैट इज वी फील इन प्रैक्टिस. अब जितना भी ट्राई करोगे अंदर घुसने का, जितना भी पूछोगे क्या हुआ था, बॉयफ्रेंड ने क्या किया, क्यों किया था, नहीं, नो एक्सप्रेशन. एक्सप्लेन करेगी विदाउट एक्सप्रेशन, आंखों के अंदर पानी भी नहीं आएगा. Natromure will show, not able to show the feelings and not showing the feelings, लेकिन उसकी आंखें गीली हो जाएंगी. That is the Natromure. Right, Arjun? Or never counsel or never do counseling of Natromure in your first practice, first follow. जब भी पेशेंट आपके साथ फर्स्ट टाइम आ रहा है, यू फील दैट पेशेंट इज Natromure, then don't go for counseling. There are 3 C's which you should avoid for Natromure: counsel, contradict and calm. ये 3 C आपको अवॉइड करने हैं. Yes. Natromure के साथ. Natromure वाला पेशेंट का काउंसलिंग फर्स्ट में मत करो, वो पेशेंट चला जाएगा. उसको contradict मत करो. कंसोलेशन एग्रावेशन. जो Natromure ने आप उसका पूरा पिक्चर आपके सामने दिखा दिया, आपको मिरर दिखा दिया, then Natromure will go away. So आपको लग रहा है कि Natromure पेशेंट है, तो बी कॉशियस, आराम से लीजिए हिस्ट्री, गो इन डीप, पेशेंट के आंख में आंसू लाइए, and that gives relief to the patient, लेकिन काउंसलिंग मत करो. जब वो आया 1-2 बार, उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद यू कैन गो फॉर इट, लेकिन डोंट डू इट इनिशियली, नहीं आएगा. ओके गाइस? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. अब जब भी पेशेंट ऐसा बोलता है कि टेलोजन इफ्लुएंस में शेडिंग होता है, तो व्हेन शेडिंग इज देयर, पेशेंट बोलेगा कि बाल में हाथ डालूं तो बंच में बाल आता है. दैट इज हेयर फॉलिंग हैंड फुल इन.
that is typical 3-mark remedy, that is phosphorus. We are using phosphorus 200 OD every morning in each and every patient of telogenic fluid. You just start prescribing. Even you get confidence with 200, you can give in phosphorus 1. We are giving phosphorus 1 OD if patient is telling you कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो हमें भी थोड़ा aggressively करना पड़ता है. In those cases we are using phosphorus 1 OD. For how many days? Till hair falling get control. Or Sir. we don't get the aggravation till now. नहीं मिला. Okay, sir. I know This is your my next question. Okay, sir. Don't afraid to prescribe medicines, guys. मेरी 10 साल की प्रैक्टिस है जिसमें मुझे अभी तक लाइकोपोडियम का एक बार एग्रावेशन मिला है, which is not called as aggravation. सिंगल रेमेडी यूज करते हैं तो कई बार मिलता है, लेकिन फाइंड आउट द कॉज. पेशेंट को पूछो कुछ, उसने कुछ खाया होगा पिया होगा, उसके बाद स्किन के ऊपर एग्रावेशन आया होगा, तो फाइंड आउट दैट वे. मिलेगा कोई कॉज मिलेगा आपको. समटाइम्स वी गेट प्रिजुडाइज्ड कि ये मेडिसिन मैंने दी है उसकी वजह से एग्रावेशन हुआ. हमारा इंटरनल फियर होता है विच क्रिएट सेंसेशन इन माइंड कि उसकी वजह से एग्रावेशन हुआ. पेशेंट को भी हम वही बिलीव करवाते हैं और फिर पेशेंट को भी वही बिलीव कराते हैं. तो एक बैरियर डाल दो कि होम्योपैथी का एग्रावेशन नहीं होता है, देन सी द रीजन. पेशेंट को भी ऐसे ही एक्सप्लेन करो. हाँ, इससे कुछ नहीं होगा. वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. हम फर्स्ट ईयर से ऐसा ही पढ़ते आ रहे हैं कि कैंस ऑब्जर्वेशन, कैंस एग्रावेशन. अरे भाई पहले इफेक्ट तो देखो उसके बाद एग्रावेशन. किलर्स एग्रावेशन, किलर एग्रावेशन नहीं मरेगा. होम्योपैथी से कोई पेशेंट मरा है? पोटेंटाइज मेडिसिन, नो इफेक्ट नो साइड इफेक्ट. मेरे एलोपैथी फ्रेंड जैसा कहते हैं, नो साइड इफेक्ट नो इफेक्ट. लेकिन इफेक्ट वी नो हाउ मच इफेक्टिव और मेडिसिन है. तो सर आपके टाइम सल्फर ने भी एग्रावेशन नहीं दिया क्या? नहीं. सीरियसली? यू कैन इवन आस्क आवर स्टूडेंट्स जो हमारे क्लिनिक पे आते हैं, किसी ने कोई एग्रावेशन नहीं देखा है. Sir, I have heard that sulfur is never to be given in the starting of the case. Is it so? ऐसा मैंने भी सुना था when I start practicing, लेकिन I am prescribing. मैंने कुछ अलग सुना था. पहले पेशेंट को हमेशा सल्फर ही दो पहले प्रिस्क्रिप्शन. कम इन स्क्रीन. ये अच्छा टॉपिक है. हेयर फॉलिंग टॉपिक में भी रहेगा, लेकिन वो डर आप में से वो डर निकालना है एग्रावेशन का. मैंने कहीं पढ़ा था हनीमन सर की जो लास्ट 10 या 15 इयर्स की प्रैक्टिस थी, उन्होंने सब पेशेंट को सल्फर ही दिया था. कोई भी पूरा केस लो सिर्फ सल्फर. अगर पहला प्रिस्क्रिप्शन सल्फर होगा तो पेशेंट को आपके पास बांध के रखेगा. पेशेंट आपके पास जाएगा नहीं आपके पास से. तो एक थियरी है, कोई प्रूफ नहीं है. मैंने भी सिर्फ पढ़ा है. मैं तो देता हूँ सल्फर. अगर फर्स्ट टाइम सर आपने किधर पढ़ा था ये आप बता सकते हो, सो दैट मैंने जिससे सुना हुआ है ना मैं उनको बता सकूं कि आई हैव रेड दिस. नहीं एग्जैक्टली वो अभी देखो कहाँ पढ़ा है वो मिलेगा, रेफरेंस तो मैं दूंगा. लेकिन मुझे ऐसा बताया है कि हनीमन सर के जो लास्ट 15 इयर्स की प्रैक्टिस है उन्होंने सिर्फ सल्फर दिया है. पूरा केस लिया सिर्फ सल्फर. कोई भी केस कोई भी निकालो एविडेंस केस सर्च करो तो लाइब्रेरी. और सर ये लोग होम्योपैथी में ऐसा भी बोलते हैं ना कि लाइक जितना डिजीज सप्रेस हुआ है एलोपैथी से, फिर आप होम्योपैथी लोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एग्रावेशन फेज आएगा ही. तो इज इट सो? ऐसे सब पेशेंट में नहीं मिलता है, लेकिन आई एम नॉट टेलिंग यू कि हर एक पेशेंट में नहीं भी मिलता है. जो स्टीरॉइड से सप्रेस किया हुआ है तो एग्रावेशन आ सकता है. लेकिन if patient is on steroid or any external application even in fungal, don't stop it suddenly. कई बार क्या होता है when you stop the previous medicine तो उसके जो withdrawal symptom होते हैं and along with that you are starting homeopathy तो वो withdrawal symptom आते हैं. अब external application clobetasol लगा रहे हो since 5 years और होम्योपैथ के पास आए और उसने बंद कर दी तो वो बढ़ने वाला ही है. Within 2 or 3 months वो aggravate होगा if you stop that clobetasol and momentazole. So in those cases patient को बोलो you just keep continue your external application, along with that we are starting homeopathy और gradually वो tapered off करें. जब हमें satisfaction होगा है कि along with that
एप्लीकेशन अलोंग विद अवर मेडिकेशन पेशेंट को इरप्शंस कम हो रहे हैं। स्किन डिसीज के अंदर व्हाट इज द इश्यू दैट फेस इज इचिंग कम नहीं हो रही है। पेशेंट हर एक फॉलोअप में आएगा इचिंग कम नहीं हो रही, वो होता है आपके प्रैक्टिस में, विच इज वेरी कॉमन। यस सर मेरी इचिंग कम नहीं हुई। फंगल वाला तो आके बोलेगा सर मेरी आपकी दवाई से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई खुजली कम नहीं हुई, लेकिन ऑब्जर्व द इरप्शन। हमें इचिंग भूल जाना है। स्किन के अंदर इचिंग आएगी ही, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन फॉरगेट अबाउट इचिंग। सी द पिक्चर ऑफ द इरप्शन। इरप्शन देखो, इरप्शन कम हुए हैं या नहीं, that matters a lot for our second prescription. जो इरप्शन कम हुए हैं then we can continue with the medication. पेशेंट को बोलो कि मैं एक एसएल दे दो कि मैं मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई मैंने एक दवाई दी है कि जिससे आपको खुजली कम होगी। अगर वो एसएल काम करेगी और आप एसएल ना दे दो तो आई एम गिविंग एगेरिकस और इकिनेशिया फॉर इचिंग अलोंग विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। पेशेंट को इचिंग में रिलीफ मिलेगा। Simultaneously, if patient which is two on cetirizine, medicine did you told? Agaricus and agaricus और echinacea, echinacea, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है, आप जो भी करते हो, echinacea और echinacea whatever. E से है, ECHI, आगे का मालूम नहीं है। sir, how to prescribe it? 1330 potency TDS, 2 pills 3 times a day. इसे 3x में भी दे सकते हो। Even people are using echinacea in mother tincture for recurrent boils. जो आयुर्वेदिक वाले कंसेप्ट है कि आपका blood is not purified, so that echinacea is a medicine that purifies the blood according to Ayurveda. Yes. So guys, don't afraid. ये हमारा प्रिजुडाइजेशन होता है कि जिसकी वजह से हम मान लेते हैं कि मेडिसिन की वजह से हुआ है। एक बार माइंड में रख दो कि होम्योपैथी का कोई एग्रावेशन नहीं, और फिर देखना आपकी प्रैक्टिस में चांद लग जाए। ओरल स्टीरॉइड्स का भी सेम है, उसको भी टेपर डाउन ही करना रहता है डायरेक्ट। इवन एलोपैथ्स आर टेपरिंग दैट ओरल स्टीरॉइड्स, वरना एक्सोजिनस कसिंग सिंड्रोम जिसको बोलते हैं वो डेवलप हो जाएगा। फीचर्स हो गए कि पेरिफेरल कोर्टिसोल और डीएचईएस कम है, लेकिन एक्सोजिनस कसिंग बोलते हैं उसको कि बाहर से इतना स्टीरॉइड दिया कि बॉडी ने खुद का स्टीरॉइड प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया। दैट इज कॉल्ड एक्सोजिनस कसिंग सिंड्रोम, वेरी कॉमन। Even guys, that hormonal pills, what is that? Progesterone, estrogen are steroids. They are external hormones, and when the external hormones are giving orally, that is steroid. Synthetic hormones are steroid. So overall, L you are prescribing in your GP practice, that is also steroid. Yes, Estrogen and that's progesterone. Estrogen, yes. Okay, androgens, yes. सर हाँ जी बोलो। हेलो सर, कोई पेशेंट ऐसे पूछते हैं कि हमको मेडिसिन कब तक लेनी पड़ेगी, कितने महीने का कोर्स करना पड़ेगा, तो हम उनको क्या आंसर करेंगे? अभी तक क्या करता है? अभी तक क्या बोलता है? For that you have to be a salesman. अभी तक क्या एक्चुअली हम बोलते तो हो? ऐसे बोलते हैं कि जैसे जैसे आपकी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करेगी, उस हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। उसको ऐसा पूछो कि आपको दवाई कैसी लगती है, वो बोले मीठी लगती है, तो फिर आओ। Basically, don't stick with some month. कई बार कई डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 6 महीने में मिट जाएगा। That is the salesman thing I am going to teach you. Don't stick with the months. 1 साल में मिट जाएगा। पेशेंट टाइम लेके आएगा, वो बोलेगा 6 महीने आपकी दवाई दी, अभी तक नहीं मिटा है। जब भी ये क्वेश्चन आए कि कितने टाइम में मिटेगा, बी अ मैनिपुलेटिव। एक्यूट है तो आज द पेशेंट कि ये 2-3 हफ्ते में कम हो जाएगा, लेकिन दैट ये सेंटेंस ऐड करना मत भूलना कि दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी इसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ये फोरहेड के ऊपर मसा है, वो मसा कब मिटेगा? मैंने मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट देखे कि 1 हफ्ते में भी मसा निकल जाता है और किसी को 1 साल भी लगता है। दिस इज द
salesman kind of explanation, and that is required to know. क्योंकि each and every patient responding in a different way, so we can't tell the patient exact time. तो पेशेंट को बोलो कि 1 हफ्ता भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, that depends on your body. लेकिन from my clinical experience, I am telling you 6 या 8 महीने लग सकते हैं, किसी को ज्यादा भी लगते हैं, किसी को कम भी लगते हैं. We will try our best. Yes, sir. तेजस्विनी, सर हाँ, एक्सप्लेनेशन बरोबर है ना? यस सर हाँ, अब convince हो ऐसा जाएगा ना explanation patient? दूंगी हाँ, बस ऐसा हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, फिर आपके ऊपर है. फिर आपके बॉडी कैसे, पेशेंट के ऊपर भी नहीं, आपका बॉडी आपकी कैसे body- रिस्पॉन्ड देगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अच्छा सर question. मेडिसिन कब स्टॉप करना वो कैसे पता चलेगा? पेशेंट बोलेगा, वो पेशेंट वो पेशेंट बोलेगा. when patient is improving, we can gradually decrease the dose or we can cut off the dose. अभी बहुत प्रोसेस बाकी, अभी मेरा दिन शुरू होता है, पेशेंट का वाइटल फोर्स ऐसा बोलता है कि नहीं सर, आई एम राइट, अब मैं ठीक हूँ. मेरे पूरे काम पड़ गए उसको लेक्चर 1 महीने एसएल पे स्किप करो, फिर उसको कंप्लीटली बंद कर दो. वो पेशेंट का वाइटल फोर्स बोलेगा कि सर नाउ आई एम ऑलराइट, मुझे अभी मेडिसिन की जरूरत नहीं है. When patient is improving with 1 m potency with phosphorus remedy, for example, पेशेंट के हेयर फॉलिंग का है और आपके साथ आ रहा है और वो बोलेगा कि मुझे अच्छा है, लेकिन कीप कंटिन्यू दैट मेडिसिन. व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट अदर डॉक्टर्स आर डूइंग, फॉस्फोरस 1 m का एक सिंगल डोज दे देते हैं एंड दे आर जस्ट वेट एंड वॉच. लेकिन दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. आप लाइकोपोडियम का सिंगल डोज दे दोगे, लाइकोपोडियम टेक्स टाइम टू वर्क 20 days, तो पेशेंट कब ठीक होगा? दिस इज द एरा कि लोगों को 1 हफ्ते में 15 दिन में ठीक होना है. Are you with me? तो you have to give repeating the medicine, क्योंकि in first thing that you are not completely sure कि ये medicine काम करेगी. Give a chance to patient to react with the medicine for 2 times. 1 डोज दे दिया, फिर 2 डोज दो, फिर भी रिस्पॉन्ड ना दे रहा है, then you have to change the potency or you have to change the remedy. होप पे मत रहो कि ये मेडिसिन काम करेगी. सर आई हैव इवन हर्ड दैट के जो है ना वो लोएस्ट पोटेंसी से स्टार्ट करना है, यू आर नेवर सपोज्ड टू स्टार्ट विद हायर पोटेंसी. That depends on patient. But sir, in that Sorry. case, what explanation I got for this answer, it was so that she told that if you start with the lower potency, then if you see some kind of changes in the patient or something, you can higher the potency accordingly. And if you already start with the high potency, then the patient won't have that ability to accept the lower potency and will not work. लेकिन उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आएगी तो वो तो होगी ना. आपने नहीं, मेरे पास भी बहुत सारे डॉक्टर्स है, दे आर स्टार्टिंग विद ओनली 60 और 30 के प्रिस्क्राइब शुरू करते हैं और उसका वो माइंडसेट होता है कि 30 काम नहीं करेगी तो 200 और 1 m देंगे. लेकिन मेरे फ्रेंड, जब मुझे लग रहा है कि ये फॉस्फोरस है तो व्हाई शुड नॉट स्टार्ट विद 1 m? क्यों वेट करना है? 30 नहीं काम करेगी, 200 काम नहीं करेगी, फिर 1 m के लिए. If patient is phosphorus in your mind and it's matching with the totality, then why you are not using higher potency? मुझे थूजा 30 से अभी तक वाट में कभी भी रिजल्ट नहीं मिला. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गेटिंग रिजल्ट विद थूजा 30, बट मुझे अभी तक नहीं मिला. I am using थूजा 1 m, 10 m. Sometimes if it is required in CM. तो दिस इज द थिंग कि अभी पेशेंट इज नॉट कमिंग विथ यू 1 कंप्लेन. पेशेंट बहुत सारी कंप्लेन लेके आ रहा है तो उसको रिलीफ तो देना है. पॉलीफार्मेसी यूज करो, उसमें कोई गलत चीज नहीं है. डोंट स्टिक टू विथ प्रिंसिपल्स. पेशेंट इज ऑल अबाउट टू गेट रिलीफ, उसको उससे ही मतलब है. आप कुछ भी दे रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑथेंटिक थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पैरासिटामोल का पाउडर दे दो, वैसा नहीं.
लेकिन आप 2 मेडिसिन दो, 3 मेडिसिन दो, आप 30 पोटेंसी दो, 1 पोटेंसी दो, पेशेंट डोंट बोदर, पेशेंट को वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो आपके साथ रिजल्ट के लिए आया है। इफ यू गिव द रिजल्ट, वो सेटिस्फाइड होगा। उसको कुछ पड़ी नहीं है हनीमून के सिंपल रेमेडी से, उसको होम्योपैथी के एग्रावेशन या होम्योपैथी के प्रिंसिपल से लेना देना नहीं है। So if you are getting fast result with polypharmacy, एक constitutional दो, along with that, if you are getting with the that specific remedies, आपको result मिल रहा है तो क्यों नहीं देना है? Are you with me? Yes, sir. Parin, higher potency use करना चालू करो. Don't start with lower सर potency. पहले हायर ही यूज कर रही थी, पर हाँ. फिर उसके बाद ये सुना ना, तब से लोअर स्टार्ट कर दिया यूज करना। एग्रावेशन बहुत नहीं सारे है, लोग आपको एग्रावेशन तो मेरे को अभी तक, आई एम इंटर्न स्टूडेंट, सो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी तक मेरे को सिर्फ एक बार एग्रावेशन है, वो भी रस्टॉक्स 200 यूज किया था डर्मेटाइटिस के लिए। क्या है? बढ़ गया था, क्या हुआ? हाँ, बढ़ गया था उसका डर्मेटाइटिस। बेसिकली वो परसेप्शन के साथ होता है। जब भी ऐसा बढ़े तब मेरी तरह के से एक बार सोचना, आप माइंड सेट कर दो कि मेडिसिन से एग्रावेशन नहीं है, एंड आस्क द पेशेंट, आपने कुछ खट्टा खाया, आपका कुछ सन एक्सपोजर हुआ, तो उसका जितने भी ट्रिगरिंग फैक्टर है वो कुछ भी हुआ होगा। सर छोटा बच्चा है वो, 2 इयर्स का, कुछ खाया होगा, उसको जिस भी चीज से ट्रिगर हो रहा है वो कुछ हुआ होगा। एक बार देखना in your patients rather than thinking that is the aggravation of medicine. I'm not telling you कि उस आपके पेशेंट में नहीं आया होगा, लेकिन अभी भी जब भी आप प्रिस्क्राइब करो तब टेक अ बैरियर, वो माइंड में सेट कर दो कि होम्योपैथी का एग्रावेशन नहीं है, एंड सी कि पेशेंट कुछ किया है, कुछ उसके रूटीन में चेंज आया है, कुछ एक्सपोजर हुआ है, उसका कोई ट्रिगरिंग फैक्टर अफेक्ट हुआ है, एंड सी यू विल गेट द ट्रिगरिंग फैक्टर। और सर मेरे को ना एक और चीज भी मिली थी, लाइक कभी कभी ना मैं हेपार सल्फ यूज कर रही थी ना पेशेंट्स में, तो उनको क्या होता था, यूरिन जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती थी। वो होता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो सर उसको मैं क्या बोलूं, क्योंकि ना वो क्या हुआ, उसमें मैंने 2 अलग अलग पेशेंट को दिया था, दोनों सेम फैमिली के थे, मतलब एक दादा को दिया था उसको, और एक उनके जो पोते होते उनको दिया था। तो उनको ना ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, दोनों को हेपार सल्फ आ रही थी, मैंने दोनों को हेपार एक्सक्रीशन, नॉर्मल एक्सक्रीशन बढ़ रहे, दैट इज गुड थिंग, तो उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेशेंट को मत बोलो कि ये होम्योपैथी से हुआ है, क्योंकि सर पेशेंट सामने से आके बोलते हैं कि आपकी दवाई ली उसके बाद मेरे को ये ज्यादा हो गया। पेशेंट ऐसा ही बोलेगा, लेकिन पेशेंट के माइंड में एक थिंग ऐसी है कि होम्योपैथी की साइड इफेक्ट नहीं है, वो उसको पता है, वो उसने कहीं पे सुना है, तो वो उसके माइंड में पहले डालो कि यू नो कि होम्योपैथी से तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन साइमल्टेनियसली ऐसा हुआ है तो उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा मेडिसिन दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो सर उसमें क्या मेडिसिन देने की, एसएल दे दूं? सिम्प्टोमेटिकली एसएल भी दे सकते हो, सिम्प्टोमेटिकली भी दे सकते हो। ओके। इफ पेशेंट हैविंग एग्रावेशन एट नाइट तो गिव एसिड फर्स्ट, पेशेंट को सिम्टम रिलीव करना है, दैट मैटर्स। और पेशेंट को जब वो एसएल्स के बाद या वो पर्टिकुलर मेडिसिन के बाद वो सिम्टम कम हो जाएंगे, तब उसको विश्वास होगा कि वो मेडिसिन के साथ नहीं हुआ। इवन वी हैव सीन ब्रायोनिया देने के बाद इफ पेशेंट इज टेकिंग मेडिसिन फॉर नी जॉइंट पेन, उसको खांसी हो सकती है, ड्राई कफिंग लेके आएगा पेशेंट, तो उस टाइम यू हैव टू स्टॉप द मेडिसिन, or you can keep continue medicine, along with that give the medicine for dry coughing. प्रूविंग के सिम्टम्स है कि नहीं, वो प्रूविंग के सिम्टम नहीं आने चाहिए, प्रूविंग के सिम्टम नहीं आने चाहिए। at that time you have to cut off the medicine. पेशेंट को मत बोलो, और आपके माइंड सेट में रखो कि इससे अभी मेडिसिन के सिम्टम आ रहे हैं तो मुझे बंद करने हैं और उसका एंटीडोट देना है, नहीं देना, आई एम नेवर गिव एंटीडोट। वो मेडिसिन की इफेक्ट स्टिमुलेशन बंद हो जाएगा वाइटल फोर्स के ऊपर। सर पेशेंट सामने से आके बोलते हैं कि आपने मेडिसिन चेंज की क्या आज? हाँ, तो उसमें क्या रिप्लाई देने का? क्योंकि तो उसमें सही बोलेगा, गलत मत बोलो। चेंज किया है तो किया है, नहीं किया तो नहीं किया है।
Basically, in my case, I am giving prescription to the patient. मैं डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट स्कैन करके देख सकता है, तो मेरे केस में तो वो मैं गलत बोल ही नहीं सकता. तो if you are changing the remedy, then tell the patient. If you are not changing the remedy, tell the patient. और बार पेशेंट को बेवकूफ नहीं बनना है. हाँ, चेंज किया है तो बोल दो किया है. मुझे लग रहा है कि अभी उसकी बात की दवाई की जरूरत है, मैं दे रही हूँ. सिंपल. सिम्टम्स थोड़े अलग लग रहे हैं. पेशेंट ऐसा भी बोलेगा आपने पहले वाली जो दवाई दी थी उससे मुझे अच्छा लग रहा था, ये नई वाली दवाई से अच्छा नहीं लग रहा है. यस यस, आई हैव सीन दिस पेशेंट. एक ही पेशेंट है जो ना मेरे पास कब से आ रहा है और वो ना कंटिन्यूअस मेरे को ऐसा बोल रहा है कि आपने वो मेडिसिन दी थी उससे अच्छा हुआ था, अभी नहीं अच्छा हुआ. दैट इज वेरी कॉमन. और उसको बोलो कि आपको जिस चीज से अच्छा हुआ था वही मेडिसिन दे रहा हूँ, although you are giving the recent medicine. That is psychological thing. You have to play with psychology. पेशेंट तो कुछ अलग भी बोलते हैं. ये जब मैं नाइट कर रहा था तब की बात है. एक पेशेंट आके बोला सर वो पेंटाप्राजोल खा के मुझे एसिडिटी हो गई, क्या करोगे? पेशेंट बोलेगा रेबिप्राजोल लेके मुझे एसिडिटी होती. बोलते हैं ऐसे पेशेंट. और भाई रेबिप्राजोल एसिडिटी की दवाई, उससे एसिडिटी नहीं होती. और पेशेंट की बात छोड़ो, मेरी मदर खुद बोलती है कि एविल खाने के बाद मुझे खुजली आती है. क्या कर सकते हैं? खुजली के लिए एविल दिया था. वो पेशेंट है, पेशेंट बोल सकता है. We have to focus on symptoms. हमें जज करना है कि कौन सा कंसीडर करना है, नहीं करना है. Okay. Yes sir. Okay. Any doubt regarding prescription and aggravation and hair falling? Hair falling तो आता रहेगा. Next time. कोई बात. चलो तो फ्लू हम खत्म कर देते हैं पहले. When ailment after anxiety के बाद ailment होता है, तो we know the remedies. Ignatia, Natromure, Coculus I, Simicifuga, even Cilicia is given in 3-mark remedy in ailment after anxiety in repertory. Even Oromat is one of the remedy. Insult after, that is offended. उसमें Ignatia भी होती है, Staphylococcus भी होती है. You can think of those remedies. Hair falling, disease abdomen after. Abdominal disease के बाद हुआ हो तो lycopodium is there. And if exhausting disease, which is very common, these symptoms you get very common, this ailment you get very common, you can think of Manzanilla, Carbovate, Thelium, and even China, which is not mentioned in this. Causative factor we have to remove to treatment of telogen effluvium. And if the maintaining cause is there, we have to remove it. Dietary deficiency is that we have to give supplements. And if thyroid is the cause, we have to treat thyroid along with the hair falling. Phosphorus, bunch of, जब भी patient बोलता है कि bunch में बाल आ रहा है, then think of phosphorus. And if the bunch of hair along with dandruff, then think of mesothelioma. Both having that symptom. Then think of sorry, dandruff plus bunch of hair fall. That is mesarium. Mesarium. Carbovage is there. You can use in TDS. China is there for telogen effluvium along with that weakness. Carbovage is along with that gastric complaint. Acidity के साथ patient आ रहा है. Gastric complaint के साथ आ रहा है with that typical weakness of carbovage, then we can think of carbovage. Metallicum में और कोई major symptom नहीं है, ailment after है, तो you can simply think of metallicum. Mancinella, especially depressive female, fear of becoming insane. Guys, have you ever feel such symptom in patient? कि मैं पागल हो जाऊंगा? Yes. कैसे? सर पेशेंट ना सामने से आके ही बोलते कि ना आप लोग इतना परेशान कर रहे हो मेरे को ગુજરાતી એટલું બધું હેરાન કરો છો તમે લોકો મને કે જેની કોઈ હદ નથી કે એના લીધે છે ને હું ગાંડી થઈ જઈશ. That is हैरानगति, तकलीफ वो है, लेकिन fear of becoming insane वो तो एक simple sentence है. Fear of becoming insane वो पेशेंट ऑलरेडी एंजाइटी और डिप्रेशन में हो, और ही इज नॉट बिलीविंग दैट आई एम इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन. वो जो कांस्टेंट लूप ऑफ थॉट्स होते हैं उसकी वजह से ही इज थिंकिंग और शी इज थिंकिंग दैट आई एम
आई एम बिकमिंग इनसेन। मैं सर पागल हो जाऊंगा तो क्या होगा? मुझे इतने सारे थॉट्स आते हैं, मैं पूरे दिन सोच रहा हूं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे डर लगता है कि मैं ये सोचूं तो क्या होगा मुझसे। That fear that is present in Mancini, fear of becoming insane, that is also present in Madurine. Even in See what potency, sir? when you are using on such fear, anxiety, depressive, you can use for 1M potency or higher than that. Generally, when I am prescribing medicine for mental symptom, I am prescribing higher potency. Mancinella for hair falling, you can use in 200 potency. Thyroidinum, I am using in the hypothyroid patient along with hair falling. You can use thyroidinum in 1M every 15 days or every week. Even patient का TSH भी control में आ जाएगा. You can reduce the thyroid medicine with the help of thyroidinum in 1M potency every week or 15 days. If patient is having anemia or B12 deficiency, you can use our biochemic, that is paraphos. Calcium deficiency, you can use calciraphos. But please prescribe that supplements. Homeopathic supplements are not that much effective. आज खत्म कर रहा था एलोपेशिया एरियाटा बाकी है, वो करेंगे, और अलोंग विद दैट एलोपेशिया का सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी हो जाएगा और थेरापेटिक, दैट वी विल गो इन नेक्स्ट सेशन. इट्स 10:30. सर एक क्वेश्चन है. बोलो क्वेश्चन के लिए तो एक पेशेंट है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दैट उनको ना बहुत हेडेक हो रहा है, एकदम हेवीनेस फील हो रहा है, एंड उसके साथ साथ ना उनको ऐसे आईज में भी थोड़ा सा हेवी फील हो रहा है. जैल्सियम आपने सजेस्ट किया था, मैंने दिया उसको, लेकिन उसको कोई रिलीफ नहीं हुआ उससे. इसकी आई चेकअप करवाया आपने? हाँ, सब कुछ उसका ना मैंने सब कुछ करवाया, आई चेकअप भी करवाया, ईयर चेकअप भी करवाया, मैंने उसका रिपोर्ट पूरा बॉडी प्रोफाइल भी करवाया, तो उसके अंदर ना आयरन डेफिशिएंसी आ रहा है. मेल पेशेंट है. और सर एक और चीज, उसका जो सेंसेशन है ना वो कैसा है, वो गुजराती में मेरे को बोलता है कि है ना મને ઉભરો આવતો હોય ને ગેસ નો એવું ફીલ થાય છે માથામાં. The cause is gastric cause. हाँ, मेरे को भी गैस्ट्रिक ही लगा. मैंने उसको नक्सवामी का दिया, कार्बोवेक्स दिया, दोनों वर्क नहीं किया. लाइकोपोडियम भी देके ट्राई कर लिया. Another remedy is argentum nitricum, having same modality of belladonna, which is emulated by tight bandage. तो argentum nitricum की हेल्प करेगी. हाँ सर, कौन सी पोटेंसी? Argentum nitricum you can use in 1M. 1M ओके. और सॉरी हो, मैं बिटवीन द लेक्चर खा रहा हूँ, लेकिन आई एम वेरी हंग्री. 10:30 हमारा डिनर बाकी है. और you can think of prunus spinosa. Sir, I can't hear you. Can you write it in the chat box? मैं आपको व्हाट्सएप वो ग्रुप में लिखता हूँ. Prunus spinosa and onosmodium. These two remedies having cluster headache. Cluster headache is a headache having headache with lacrimation from eyes or not lacrimation, having pain in eyes. That is a type of migraine, that is cluster headache. उसके लिए remedies are prunus spinosa and onosmodium. मैं आपको ग्रुप में वो मेडिसिन मैसेज करूँ. You just match it with your patients. सर उसको क्लस्टर हेडेक नहीं है. मैंने उसको पूछा था, लाइक एक ही साइड होता है ना, वो उतना तो पढ़ा है हम लोग ने फाइनल ईयर. अच्छा पढ़ा है. क्लस्टर हेडेक जनरली वन साइड होता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वन साइड ही होता है. दो साइड भी हो सकता है. लाइक माइग्रेन भी एक मीथ है कि दैट हैपेंस ऑन वन साइड. दैट इज नॉट ट्रू. माइग्रेन भी दोनों साइड हो सकता है. ऐसा ही क्लस्टर हेडेक भी दोनों साइड हो सकता है. पेशेंट को जो राइनाइटिस हो रहा हो, तो वी कैन थिंक ऑफ सैंकैन वो पेशेंट के अंदर एज अ फ्रंटल हेडेक की तरीके से.
यू जस्ट मैच इट विद योर पेशेंट और क्या दे रहे हो वो बताना और उससे रिलीफ हुआ या नहीं वो भी बताना। सर अपना अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया, मुझे वो ज्यादा बेटर लग रहा है अभी प्रिस्क्राइब करने के लिए। प्रिस्क्राइब करके देख। स्वीट हाँ, डिजायर लेकिन नहीं, उसको पूछ सर, उसका फिजिकल जनरल सेम उसका जो पहले था वैसे ही। मैं कितना पूछा, लाइक थर्स्ट कुछ मेरे को मिल जाए तो मैं कुछ उसको डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, सब कुछ पूछा लेकिन कोई कंप्लेन नहीं। बीच में एक दिन उसको कंप्लेन हुआ था कि उसको ना स्टूल प्रॉपर पास नहीं हो रहा था, सब कुछ हुआ था। देन उसके बाद मैंने उसको नक्सवामी का दिया ना, तो उसको ठीक हो गया। ओके क्या एज है पेशेंट का? 38। 38। अर्जेंटम देके दो। पेशेंट की डिजायर भी नहीं, कुछ खाने में मजा भी कुछ नहीं आता है, स्वीट स्पाइसी कुछ भी डिजायर नहीं। उसको ना टिपिकल जो हेडेक होता है ना, वो अभी मैंने वो ग्रुप में भी एक दिन डाला था, दैट 6:15 PM का उसका टिपिकल एग्रावेशन है। 6:45 तक लास्ट होता है। 6:15 6:15 को शुरू होता है। इवनिंग 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 में शुरू होता है 6:15 टिपिकल टाइम। टिपिकल 6:15 वो मेरे को ऐसा इतना टिपिकल बोला दैट पेशेंट ने मेरे को ऐसा बोला कर के है ना, अगर मेरे को हेडेक स्टार्ट होता है तो मैं वैसे ही समझ जाता हूँ क्योंकि 6:15 हो गए हैं। पेशेंट ऑफिस में होता है उसमें या घर पे होता है? नहीं, वो काम पर होता है। वो ना एक्चुअली जो वो होता है ना अपने करियाना दुकान, ही इज डूइंग दैट वर्क, सो वो उधर होता है। खुद की दुकान है। ओके ओके तो कंप्यूटर आई स्ट्रेन तो उसका कोई नहीं है। नहीं है मैंने उनको जो है ना फोन जो है वो कम यूज करवाया है अभी। उससे कैसा है? उसके बाद कम हुआ? हाँ, वो पहले पूरा दिन होता था। अभी उसको टिपिकल 6:15 PM को एग्रावेशन होता है, 6:45 तक लास्ट करता है। तो वो जलसेमियम या नक्सोमिया के बाद हुआ हेडेक कम या हाँ, उससे पहले कम हुआ? नहीं मैंने नक्सवामी का और वो सब कुछ उनका रिपोर्ट्स करवाए ना, उसके बाद मेरे को आयरन डेफिशिएंसी लगा, तो फिर ना मैंने उनको बोला कि आप कैरेट, बीटरूट एंड आंवला उसका ना जूस पीना स्टार्ट कर दो एवरी मॉर्निंग एज इट्स विंटर। एंड नेक्स्ट थिंग मैंने उनको नक्सवामी का दिया क्योंकि उनका टिपिकल सेंसेशन जो था वो ऐसे गैस फॉर्मिंग एंड सब कुछ था। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जो पहले हेडेक था वो कम हुआ, वो कब कम हुआ? वो उसके बाद ही हुआ। नहीं, ये रिपोर्ट्स करवाए उसके बाद ही हुआ। मैंने बीच में मैंने उनको नक्सवामी का दिया था, लेकिन तब उनको कुछ रिलीफ नहीं, जेलसेमियम नहीं वर्क किया। फिर उनका कुछ ऐसा सिम्टम आया जिससे मेरे को गैस्ट्रिक लगा, तो मैंने नक्सवामी का दिया, तब नहीं वर्क किया। लेकिन अभी मैंने ना उनका रिपोर्ट्स करवाए ना, उसके बाद से उनको ना अच्छा होना स्टार्ट हो गया। नहीं तब नक्सोमी का चालू थी या सिंगल डोज दिया था आपने? नहीं, चालू थी। तो फिर नक्सोमी का से कम हुआ ना? हाँ हुआ। तो सर अब नहीं, अब क्या हुआ उसके अंदर मैं आपको बोलती हूँ। पेशेंट को अच्छा हो गया, पेशेंट 2-3 दिन मेरे पास नहीं आया। अभी मेरे को उनका फोन आया दैट मेरे को ना वापस से जैसा पहले हेडेक होता था ना वैसा स्टार्ट हो गया, पूरा दिन हेडेक रहता है हेवीनेस के साथ। ओके तो नक्सोमी का रिपीट करो और कोई मेडिसिन अभी मत सोचो। पेशेंट को पहले पूरा दिन सिर दर्द हो रहा था, उसके बाद सिर्फ वो 5:15 को हो रहा है, इट मींस इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड, बराबर। और नक्सोमी का उस टाइम चल रही थी, तो नक्सोमिका ने काम किया है। आपकी नक्सोमिका का या पोटेंसी बढ़ाओ या रिपीट इट। आप कौन सी पोटेंसी में कितने टाइम दे रहे हो? मैं उनको 200 पोटेंसी एवरी आवरली दे रहे हो, तो अभी 1M करो और 1M मेडिसिन एवरी मॉर्निंग दो। पर सर उनको ना टिपिकल ऐसा है कि नहीं, आपको ना मेरे को पूरा 1 आवर पे मेडिसिन देनी है तो ही मेरे को ठीक होगा, बाकी नहीं होगा। दो ना, पेशेंट को एसएल देने में क्या तकलीफ है, एसएल दो। सर वो ना मेरे सामने बैठते हैं, मैं मेडिसिन बनाती हूँ और एक में से डाल बॉटल पे एसएल लिक्विड नहीं होता? हाँ होता है, मैं उसी का निबल मार दो एक दिन के लिए। ट्रिकी तो होना पड़ेगा ना थोड़ा। तो आपको पता है कि नक्सोमिका से कम हो रहा है, तो नाउ इंक्रीज द पोटेंसी। ओके, आई ट्राई विद 1M। आई ट्राई विद 1M। मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को वापस से ये केस डिस्कस करोगे एंडिंग में नक्सोमिका देने के बाद। करो 1M करो, 1M ओडी और उसके बाद वापस डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी मेडिसिन चेंज मत करो। इफ पेशेंट इज फीलिंग बेटर, भले ही थोड़े दिन के लिए कम हुआ, लेकिन नक्सोमिका के बाद कम हुआ है। हाँ हुआ है, 100% कम हुआ है। हाँ तो 100% कम हुआ तो फिर वही थोड़ी देर कुछ नहीं होता, क्योंकि वो खुद मैं बोलते रही हूँ 3 दिन तो मेडिसिन लेने भी नहीं है, बोले मैं एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, पहले जैसा हो गया मेरे को।
तो वो तो रिपीटेडली होगा ही। माइग्रेन है या क्लस्टर हेडेक है तो एक दवाई के देने के बाद या एक डोज देने के बाद पेशेंट को मिट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दैट कंसेप्ट इज रॉन्ग इन आवर माइंड। पेशेंट को हर रोज हो रहा है तो वो उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम होगा। आपके साथ माइग्रेन वाला पेशेंट आ रहा है, उसको हफ्ते में 3 दिन दर्द हो रहा है, तो अपनी मेडिसिन जाने के बाद हफ्ते में 2 दिन होना चाहिए और उसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए और लेसर देन दैट, तो पेशेंट इज इम्प्रूव, अदरवाइज नहीं। और दैट डजंट मीन कि नक्सोमी का कोई भी मेडिसिन दे दो तो कल से हेडेक होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इट टेक्स टाइम टू गेट क्योर। सर वो पेशेंट है ना, मेरा सर खा गया है। एक दिन मेरे को आके ऐसा बोला कि मैं पूरी बॉटल पी जाऊं क्या ये मेडिसिन की, तो मेरे को ठीक हो जाएगा। ये नक्सोमी का ही है, कंफर्म। दो वरनम दो। नक्सोमिका के पास टाइम नहीं होता है, उसको बहुत जल्दी मिटाना होता है। बोले अब ना मैं थक गया, उसका वर्डिंग कैसा था, अब मैं ना बहुत थक गया हूँ इस चीज से, मैं एक काम करूँ पूरी बोतल पी जाऊं, उससे मेरे को ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, आपको धीरे धीरे ही मिटेगा। मैंने वैसे ही आंसर दिया उनको, तो मेरे को बोले कितना टाइम लगेगा। अभी बाकी सब छोड़ दो, वरनम कर दो। आप में आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाना है, बाकी मिट जाएगा। ठीक है, इंक्रीज द पोटेंशियल। ठीक है, सिर्फ ओडी में ही दो। हाँ वने मोड़ी दो, कोई दिक्कत ठीक है, ठीक है। ऐसे केस डिस्कस किया करोगे मेरे साथ। आपका आप कहाँ पे अटक रहे हो ना वो पता चले। अब मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा हूँ। इनिशियली यू टोल्ड कि जलसेमी और नक्सोमिका के बाद पेशेंट को अच्छा नहीं था, एंड इन आवर कन्वर्सेशन यू फील कि पेशेंट को बीच में अच्छा था। हाँ, मैंने बहुत मेडिसिन जब चेंज की थी, आई यूज पॉलीफार्मेसी। बाकी मेरे माइंड में ना सिंगल मेडिसिन का ही वो कंसेप्ट था, फिर मैंने पॉलीफार्मेसी चूज की, तो उसके बाद उसको थोड़ा अच्छा हुआ। आप भी पेशेंट के साथ साथ आप भी सीख रहे हो। यस, यही है, पेशेंट के साथ देते सीखना है। हर एक पेशेंट कुछ सिखाएगा। जलसेमियम वाला टिपिकल हेडेक दूसरे पेशेंट में दोगे तो रिलीफ नहीं मिलेगा। yes. उसके लिए कुछ और, उसके लिए कुछ और। दिस इज ऑल अबाउट होम्योपैथिक ट्रायल एंड सर मैंने ना टीएमवी जो मेडिसिन आपने लास्ट टाइम बताया था ना नोज ब्लॉकेज के लिए, वो भी मैंने यूज किया, इट वर्क वेरी नाइसली। कितनी एज थी पेशेंट की? एज 50 प्लस कुछ था, ऐसे 60 आसपास होगा। जनरली इन इन्फेंट इट वर्क्स 100%, आई कैन टेल यू, इन इन्फेंट। लेकिन एडल्ट में भी वो बच्चे नहीं, बहुत अच्छा काम किया, एक ही दिन में उनको रिलीफ हो गया उसके अंदर। ओके गाइस, घर पे बहुत गालियां पड़ने वाली। इट्स 10:45. ओके, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? सर इन हेलोजन एफ्लियम मेडिसिन लिस्ट दिया ना सर आपने, उन सब मेडिसिन को 200 TDS में देना पड़ेगा सर, अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन। क्या 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 वापस? Last in the last page you have seen the you have shown the all the medicine list no sir, phosphorus, CV, meserium. Sir, what is the prescription of all the medicines 200 TDS? Can I give like that? If you are selecting remedy from the ailment and the specific remedy is there, you can prescribe it in 200. Phosphorus is the remedy which we are using in 1 MOD. Every morning dete hain in 1 M. You can start with 200 if you are not that much confidence to prescribe 1 M. 200 भी help करती है, लेकिन you can use 1 M phosphorus. I'm talking about phosphorus. And other remedies you can give in 200 potencies. 200 body for how many days, sir? Thallium metallicum is a metal, so we are not frequently using that. So that is every week. And other carbohydrates, China, everything you can use it in 3 times a day. 200 TDS. 200 TDS, yeah. Phosphorus 200 body. 200 body or 1 MOD. Okay, sir. Okay. Up to the result is happened. Yeah, you can use it at least 2 to 3 months. So gradually change देखने को मिलेगा. Okay, sir. Along with that, constitutional medicine चल रही है, so you can increase the dose or you can give the complementary. Yes, sir. Sir, in the case of migraine also, you have told that Silicea for migraine with neck pain. I have given for at least 2 weeks. Sir, what's the good name? आपकी आवाज कट हो रही है.
Sir, am I audible now? Yeah. In the last class about migraine, you have told that silicia for migraine along with the neck pain, sir. Dragging pain of neck, to neck. I have prescribed, but the same thing happened. That the symptoms come ho raha hai, and after that recurring the symptoms. Yes, recurrence are always there in migraine. Migraine आप single dose दे दोगे तो patient No, sir, 200 OD, sir. 200 OD you can use Cilicia, not an issue. 200 OD for I have given for 1 week. Symptoms has declined, but there is recurrence. Yes, Can I recurrence. shift to 1? Yes, I am telling you that thing. कि recurrence तो होगा, लेकिन if patient is getting relief, then keep continue same medicine. वो medicine change मत करो. Patient को जो relief हो रहा है. If patient is telling you कि मुझे 5% भी relief है, then keep continue same medicine. Change मत करो. Okay. कई बार क्या होता है, if we are becoming aggressive, patient को 5% भी relief है, हम उसको 20% relief करने के लिए medicine change कर रहे हैं, तो केस बिगड़ जाता है. Okay, sir. Patient is satisfied with the medicine, so no need to change the remedy. Okay. Patient का satisfaction और हमारा observation का satisfaction होना चाहिए. If you are prescribing for the medicine on skin disease, तो skin disease के लिए patient की itching तो कम हुई या ना कम हुई, that is a different thing. लेकिन उसका eruption कम हुआ है, then keep continues the same medicine. If you are talking about migraine, तो उसकी frequency और intensity कम हुई है, तो keep continue with the same medicine. Change मत करो. Sure, sir. Okay. Any doubt? Yes. No, sir. Okay. तो चले आज. Night. एक लास्ट अगले में रखो ना, please. ठीक है, कोई बात नहीं. If वैसे it भी is वो not पेशेंट कल ही नहीं वो पेशेंट कल ही आने वाला है, सोरियासिस का बोलो, पेशेंट. कल आने वाला है तो that is नहीं मेरे को उसका केस टेकिंग लेना ही बाकी है. सोरियासिस का था, सो आई वाज जस्ट लाइक के यू कैन गिव सम मेडिसिन्स ऐसे कुछ. मेडिसिन बहुत सारी है स्किन की, तो लेकिन पहले केस फिर डिस्कस. ठीक है. चलिए. ओके सर, गुड नाइट. बाय. थैंक यू सर. ओके, बाय बाय. गुड थैंक यू सर, गुड नाइट. Thank you, sir. Good night. एंजॉय योर वीक और एंजॉय करते करते प्रैक्टिस करो. घबराते